All right, today we are moving on to the very last chapter. I mean, stakeholder, we have already finished. So, procurement was left. Project procurement management. Comparatively, this is just like quality, it is much simpler because it has only three processes here. But again, just like quality, this is very important because this is that portion of the project which you have decided not to do yourself, and you have decided to outsource it to someone else due to various reasons naturally. So procurement is a complete science in itself. It is a complete management discipline, and it associates very closely with contract management. Procurements and contracts are usually considered very similar to each other, but some organizations do have procurement departments separate from contract departments. In other organizations, procurement and contracts are handled by the same department. But looking at it from the perspective of project management is a bit new because here we are talking about doing a project in which certain parts of the project are not to be done by us, and we want it to be done by someone who is better in doing those jobs, and we want to transfer the risk to that party. So project procurement management includes all the processes necessary to purchase or acquire products, services, or results. It could be any deliverable. I could have ordered a raw material, a finished good, or a service, or even a result. So it could be anything which I want to order from an outside source and need it from outside the project team. We do not want to do it by ourselves. We are not creating this deliverable by ourselves, but we are getting it done by someone else and we are paying for it. Project procurement management include the management and control processes required to develop and administer agreements such as contracts, purchase orders, memorandums of agreements, or internal service level agreements. So, with whomsoever we are getting into a contract, we are getting into agreement, we write down that agreement into some formal documentation, and then we govern that contract according to that agreement. The personnel authorized to procure the goods or services required for the project may be members of the project team, management, or part of the organization's purchasing department if applicable. Now, why does it say that? Naturally, if the procurement I'm doing is for the project under my responsibility, then naturally project manager and his team are responsible. But as I was mentioning earlier, there are organizations which have their own procurement departments, contract departments. And why do they have them? Because their job is such, their normal operation is such that they have to get a lot many things done from outside sources. So they are regularly dealing with procurements and contracts all the time, and therefore they have specialized departments handling those kinds of issues. So if in such an organization you are running a project and you need to procure something for the project, probably the best bet would be to go to the procurement department and ask them to help you because they are expert in their field. So they will help you procure the items. They have the specialization. They have the details how to handle the contractors. But at the same time, I would uh, emphasize no matter if you have a procurement department or not, you have a procurement policy or not. If the procurements are being done for project management manager has to take ownership of that work. You just can't forget about it by saying that now it is the ball in the court of the procurement department and now it is their responsibility to make this thing available. Actually, they have procurement department might not have any interest with your project objectives. So if the procurement is being delayed, who cares? If procurement is not of the standard and quality you require,
then who cares? So project manager cannot just close his eyes and leave it on the procurement or contract department to deal with the contractor, because project manager has to remain in direct interaction throughout. I agree that if you have a procurement department or a contract department, you should utilize their resources to the best of your project, for the best benefit of your project, not be ignorant about what is happening. I would say that exactly same policy should be used for human resource. For human resource, naturally, normally we do have the human resource department available, and when we need some staff or people for the project, we normally uh, tell the procurement department to make them, sorry, human resource department to make them available. So what if those people are not appropriately selected? What if they do not have the skills what we actually require? So in that case, project managers' involvement in selection of human resource, and for this matter, for the selection of the contractors suitable for the work of the project, probably project manager has to remain involved with all such interactions. So we just can't shirk away this responsibility of the project manager, that he needs to be involved with that. Still, still, I'm saying that wherever and whenever we need to uh, utilize the services of the human resource department or the procurement department, yes, we should, but with proper check and balance, with proper responsibility of the project manager. Project manager should feel responsible for anything coming to the project and going out of the project. So the three processes I was mentioning are the plan procurement management, conduct procurements, and control procurements. Very simple, but plan procurement management in itself is a huge project, huge process. Why? This does a lot many things. This is just not the procurement policy translated into the procurement management plan. Yes, of course, your organization would be having some procurement policy. Your organization may be having some procurement strategies, some rules and regulations regarding procurement might be in vogue. Yes, of course, we are going to use them, but that is not all. I have to decide what I need to procure for my project in terms of the product, service, or result. So the decision to what to procure is to be made first. But naturally, before making that decision, must have the guidelines for procurement management properly jotted down, just like any other management plan. I used to develop a schedule management plan, a scope management plan, a requirement management plan. So I will require to have a procurement management plan, which will explicitly tell me how to decide what to procure, how to create the various kinds of procurement documents, how to create the evaluation criteria, how to start the process of selection, how to actually do it, how to, you know, get into a contract or an agreement with your contractor, and how to manage that contract later on. So the guidelines would be there in the procurement management plan, but that is not all about planning. We will still need to do a lot many things which we have created guidelines for. That physical decision, which job is not to be done by us and which is to be outsourced. This is called the make or buy decision. I have got the complete work breakdown structure and the activity list in front of me. I can analyze that complete list of activities with my team and try to identify those areas in my project which I feel should not be done by us. So that is the make or buy decision. Now, why should we decide not to do something? Any ideas, Ram? Sorry, sir, if you can repeat, there was a lag. I was asking
about the make or buy decision. Why is there a need to make this make or buy decision? Why should you not be doing that job by yourself, and why are you trying to outsource it? So there could be a few reasons. Number one is when you do the make or buy decision, you find out that it's much cheaper for you to get someone to do it rather than do it yourself. Number two would be you don't have the expertise to do it. Bilkul. And number three, if the schedule is tight, it would take far more time to do it in that schedule. So it could Mm. be a mixture of two things. Wonderful, wonderful. You see, um, actually, what happens is that there are three situations in which you do not want to do it yourself. You want to get it done by an outside source. Number one, as you said, I do not have the capability to do it. I do not know how to do it. I do not have the specialization to do that job. I don't know how to do it. In that case, I would look for a party who can do it, and I would rather like to get this job done by them. Secondly, I know how to do it. I do have the capability, but I do not have enough capacity. For example, I can write one good essay per day, and somebody likes my essay and he asks me to write 100,000 essays in a day. Naturally, I do have the capability to write it, but I do not have the capacity to write it. I can't write 100,000 essays in a night. So this is beyond my power, although within my capability, but beyond my capacity, and therefore such like jobs are also, we consider them for make or buy decision. We want to outsource. Maybe I want to hire services of a contractor who has 1,000 authors, and who all can sit down together in a night and write 1,000, 100,000 essays. So this is where I do not have the capacity. So capability, one reason, capacity, second reason, and third reason is maybe I do have the capability as well as the capacity to do that thing, but I do not want to do it because of the high risk attached to it. Because of the high risk attached to it. Now, some people say it is high cost or time or whatever, but I say it is a high risk. If I do it myself, it will cost more. If I do it myself, it may take more time. So why not get this thing handled by the experts? So you see, if I try to manufacture my own car, probably it will take a lot of time and a lot of money. But if I buy it from someone who is in the business of making cars, then probably it will, of course, be very cheap and could be produced in much lesser time. I may have the capability. I may be a mechanical engineer. I may have all the capability and capacity to do that. I can make this car, but this car I will make will be many times expensive and will take much more time. So this is the third reason that I want to transfer the risk. I want the things to be handled by the experts. So three reasons: capability, capacity, and risk. So any one of these reasons could give us the enough uh, justification for this make or buy decision. Make or buy decision is basically based on the analysis of make or buy. We make and buy means that what we should be doing ourselves, that is make, and what we should be buying, meaning what we should be outsourcing. The services or product we want to buy from someone, that is the buy thing. So make or buy. So out of the several project activities I have, there would be some portions of work I would not be able to do it by myself due to these three issues: capability, capacity, or the risk. So I have to identify and recognize those portions of work. I'm not saying that is just one work or one activity. There might be a group of activities,
or you may even like to call it a sub project within your project, which portion is cannot be done by you. So you decide to, give away that project to someone. So this is make or buy decision. Then, based on the procurement management plan, while in planning, procurement management plan though is created, but I have done the make or buy analysis in addition to what the procurement management plan is. So I have created the uh, make or buy decision. And then after the make or buy decision has been created, the next thing I develop is a statement of work. Remember, a statement of work is only created for those jobs for which I have already decided that they have to be outsourced. Meaning the make or buy decision has been made and we have decided to buy something. So for all portions of works, one or more portions of works which are to be outsourced, they all will have a statement of work written. This statement of work is going to be the basic document based on which all subsequent procurement documents will be created, like, the evaluation criteria, the selection criteria, the information for bid, or request for proposal, request for quotation, whatever is being created. This all is basically dependent on the statement of work. And ultimately, naturally, I have also decided the evaluation criteria and the source selection criteria and all everything I have already decided. Now the thing is uh, to ultimately select a seller and award this contract to assign an agreement with that contractor. I would call it a seller because I am the buyer of the services and that person is selling the services. So I will sign the agreement with that seller. Uh, so far, I am in planning. I am not signing any kind of contracts. I yet do not know uh, which sellers will be bidding for it. But in planning, I should have a draft contract already prepared. All the documents, this is included in the procurement documents, all the documents should be prepared during planning, although the physical action on procurement only can start in conduct procurement, which is in execution. So I already have the the statement of work ready. I already have the procurement documents ready. I have the selection criteria ready. I even have the draft contract ready, but I don't know who is going to be bidding. So invoking or inviting the bid process would actually happen in conduct procurements, which is in execution. So whichever portion of work is to be outsourced, just in on the just in time policy, we will activate the process of invitation for bid from that point backwards where the contract is supposed to be awarded. So when we want that job to be done by the contractor, so giving due margin for this selection process of the contractor, we will start the process of procurement, say 3 or 6 months earlier than the date the job should have started. So uh, whatever, say 3 months, 3 months earlier than that job should have started, the outsourced job should have started, I will float the invitation for bid or tender notice in the newspapers. I will receive the bids and I evaluate the bids according to the evaluation criteria. And ultimately, I will reach a decision and select whomsoever is the best and sign a contract or an agreement with them. So all the process from starting the invitation for bid process till the signing of contract, which includes a lot many activities, meaning pre-bid meetings and negotiations and discussions and presentations and all that. This all happens in conduct procurement. Once the contract is signed,
conduct procurement is done, completed, finished. As far as execution from our side is concerned, I am the buyer. From my side, I have done my job. I have executed my job. I have executed the procurement. Now we have a contract in our hand. We will hand over this contract to the procurement, to the monitoring and control process group. And monitoring and control will have a process called control procurements, which is to abide by the contract. The both parties, the person who is responsible for the contract control procurements would ensure that all the dealings between the two parties are according to the contract. If there is a change request from the contractor side, then it is handled properly by the contract manager. If it is a change from our side, then it should be properly negotiated with the contractor and so on and so forth. So control procurement is a process of managing procurement relationships, monitoring contract performance, making changes and corrections as appropriate, and ultimately closing out the contracts. So there are only three processes here. Procurement processes are presented as discrete processes. Again, as we discussed about a lot many other things before, um, people think that like we say there is a procurement department, they're specialized in doing all these things. So probably this is supposed to be a specialization. Procurement is supposed to be a specialization, and all three jobs, plan procurement, conduct procurement, and control procurement, is considered to be one single job, all meshed together. But actually, as we have been debating it from the right from the beginning, that the processes shown in PMBOK, they all are unique processes. They all are discrete processes. They have their own tools and techniques. Although we agree that they can be done by the same person or they can be overlapped, but that does not mean that these processes become one. So you just can't say procurement covers all that. Well, in planning, we will have to go step by step. First, we will plan the procurements, then we will conduct the procurement, then we control the procurement. So they may appear as discrete practices, but in practice, people are trying to do them all at the same time. Okay, let me show you the three processes, their inputs, outputs, and tools. I hope this will appear in front of you in a while. This is basically figure 12.1. Yeah, probably it is there. So in planned procurements, I need to have the project charter. Why? Because as I said, procurement is a sub project of my project. Whether I have divided my project into sub projects or not, but the portion of work which I'm trying to outsource is anyways a sub project, a portion of my project. So whatever it is, so whatever the whole charter is, that applies to this work also partially. So I have to consider the charter, and not only the charter, but all the calculations I have made so far, as far as the scope, time, and cost are concerned, they will also be inherited to plan procurement, as if the after the make or buy decision has been made, the relevant estimates and calculations about time, cost, and scope should be transferred to the procurement thing, and the contractor should be ultimately responsible for those further processing of those things. So we have the charter, we have the business documents, project management plan, which includes all those relevant plans, naturally schedule, cost, and everything, which makes up the project management plan. All the relevant project documents, which will include all the estimates, cost estimate, resource estimate, all that. So those estimates are all to be included in it, and enterprise environmental factors and process assets. So the tools and techniques I'll be using here would naturally be the expert judgment. I would be gathering the data about the various types of contracts, various types of sellers, and lot many things. And maybe I am also interacting with my stakeholders. And the interesting thing is, the stakeholders I had so far identified, they we were not really sure at that time what portion of work may be outsourced. Therefore,
the sellers which we require may or may not have been identified in the first place. Therefore, when I create the procurement documents out of this process, this plan procurement management process, after the plan procurement management process, that procurement documents will go back to initiation for identification of those stakeholders which could be our sellers. So this is one way that procurement documents could go back all the way to initiation just for the purposes of identifying the sellers. I mean, pre-qualified sellers or whatever you want to call them. Then we have the data gathering, data analysis, source selection criteria. This source selection criteria is specific to the procurement, that whomsoever would be bidding, how would we, you know, measure them, how would we analyze them, how would we mark them. So that all is a source selection criteria. Then we will have meetings within our team, and ultimately we will come up with a number of documents. One is basically the procurement management plan, which is the basic guideline. Based on that procurement management plan, we will develop the procurement strategy. And naturally, for procurement strategy, I will take into account my company policy and all that, procurement policy, company policy and all that. Then my bid documents. This is bid documents will also, this is the procurement document you want to call it. So these are the bid documents. Procurement statement of work. For each portion of work to be outsourced, there might be more than one portion of work which had to be outsourced. For each portion of work which had to be outsourced, we have to develop a separate statement of work. We must have created a source selection criteria during this process, how the source will be selected. We must have done the make or buy decision, that must be recorded. And the most importantly, we must have created our own independent cost estimate of the work which we want to be outsourced. Maybe I can do it in X amount, but I do not want to do it due to several reasons, and therefore I want to be sure that I am not being overcharged. So therefore, I should have my internal estimate in front of me before analyzing the bids of prospective sellers. Change request can be moved from here. Project documents and organization process assets can be updated. Conduct procurements, we will have the project management plan, project documents, and the procurement documentations which we had created. Seller proposals would be received. These are the bids sent by the sellers. And enterprise environmental factor and process assets are also the input. We will again here do the expert judgment. You see, just remember, right from we advertise for any contract till we award the contract, all the work in between is part of the conduct procurement. So advertising is included, bidder conference is included, data analysis is included, interpersonal and team skills are included. So all these tools are required for creating the output of conduct procurement, which is the ultimately the selected seller or with whom we have signed the contract. So the agreements are also the output. Change requests, if any, project management plan documents or organization processes could have been updated in this process. In control procurements, now we have to keep an eye on the change request process and how the contract is being followed down to the spirit of the letter. Project management plan, project documents, and agreement or contract, whatever. Procurement documentation, approved change request, if any, because if there is a approved change request, then that has to be affected within the project according to the contract. Work performance data, enterprise environmental organization processes, these are the inputs for the controlled procurement. Here again, you have to do the expert judgment and you see what else you need to do. You have to ensure that first of all, you have to do the audits and inspections of all the work being done by the contractor. What are audits and what are inspections? If we are looking at the processes and work of the contractor, that is audit.
If you are looking at the product or service of the contractor, that is called inspection. So you must be having the schedule for audits and inspections in your agreement or contract. Because if you don't, the contractor will never show you anything. Everything, the understanding between two parties is the contract or the agreement. You must get everything written properly into the agreement, otherwise you will be the loser. Then you need to do here the payments management. Before the payments can be made, there has to be a claim management system. As soon as the contractor has completed a portion of work which he was supposed to do, he would enter a claim. Then you would look at it and there will be some conflict resolution. Once the conflict is settled, you will agree on receiving the product. They will deliver the product, the deliverable to you. You will accept it and make the payment. So there is claims management. There is what do you call it? Payment management. I mean claims management and this payments management. And the third thing is uh, you will maintain a record of all proceedings with the stakeholder. So the third thing is the record maintenance. Anyways, so this all is included in these tools and techniques. Ultimately, you will close out the procurement as and when a procurement is finished, that would be closed out. Work performance information will be generated because you already have the work performance data. Procurement documents will be updated, change requests will be moved, if any, project management plan, project documents, and organizational process assets will be updated. Okay, some general things about procurement management. A contract should clearly state the deliverables and results expected. You see, the agreement between two parties is the contract. So whatever is written there is the law. If you have been careless in formulating the contract and your contract does not describe the deliverable as you wanted it to be, then whatever is written in the agreement, the seller is bound to deliver that and nothing more, nothing less. So you can't complain. You can't even go to any court of law and say, well, I was expecting something else. Well, if you were expecting something else, you would have gotten it entered into the contract. So the contract should clearly state the deliverable and the results expected, including any knowledge transfer from the seller to the buyer. This is also important. Do you only need the product, or maybe you need the rights on that product? So this should be part of the contract. Anything not in the contract cannot be legally enforced. When working internationally, project managers should keep in mind the effect that culture and local law have upon contracts and their enforceability. No matter how clearly a contract is written, you see, contract is law, but contract is a law under the local law. Contract could not be in defiance with the local law. You cannot contract someone out to kill someone, because the murder is a crime in the national and international law. The contract does not make it a law that because you have assigned him to kill someone, he must kill that person, because such contracts will not be binding. They will, they cannot be contracted, which are in contravention with the national or international laws. So whatever kind of contract two parties are having, though that must be legal, and only then it will be enforceable. A purchasing contract includes terms and conditions and may incorporate other buyer specific as to what the seller is to perform or provide. It is the project management team's responsibility to make certain that all procurements meet the specific needs of the project, while working with the procurement office to ensure organizational procurement policies are followed.
You see, that was the point I was trying to make. No matter if there is a procurement office existing in your organization, but the responsibility is of the project manager and his team to ensure that everything coming to the project is according to the contract and is properly fulfilling the needs of the project. So the interest of the project has to be looked after by the project team, not by the procurement office. So we will work closely. We agree that procurement office is specialized office and they know what they are doing. But at the same time, I will have to guard the benefit, guard the interest of the project as well. So I will represent that side. Depending on the application area, an agreement can be a contract. It could be a service level agreement, an understanding, a MOU, or a purchase order, or sometimes it is even a verbal promise. Does not matter. A verbal promise is also a contract, a verbal contract that could be there. But it is better, it is always better to write the contract down in some formal form. Most organizations document policies and procedures specifically defining procurement rules and specifying who has authority to sign and administer such agreements on behalf of the organization. This is normally in the organization, the procurement office or the procurement policy of the organization says who can do what about procurement. So procurement departments are normally formed for that specific purpose, and the laws and the strategies available in the organization are enforceable. Across the world, organizations use different names for these departments or divisions that deal with procurement. Some call it purchasing, some call it contracting, procurement, acquisitions. However, the responsibilities are likely to be similar. So it does not matter what is the name of your department in your organization, but these all are valid names, and there might be all four of them in the same organization. But this all depends on what are the functions your organization has earmarked for them. Although all project documents may be subject to some form of review and approval, the legally binding nature of the contract means it will be subjected to our more extensive approval process, often involving the legal department. It is a very important point. We are in habit of signing on the dotted line under the fine print, which is not good at all. Anyone who is signing any kind of agreement is supposed to be reading through everything he is signing and know, and even uh, contact your get in touch with your lawyer and show him what you are signing if it is of any legal importance. For contracts in organizations, there has to be a legal department who will vet that. Normally, for large contracts, there are three people who are sitting in the negotiation table when the contracts are being signed: the chief executive, the legal department representative, and the finance department representative. The technical department or the technical expertise is not really much required at the time of signing the contract because technical work has already been properly decided. But during the negotiation of the contract, if there is a need of uh, you know uh, changing some of the functions or features or the requirements, and you want to see the technical effect of those things on the contract, then only you can call the expert on technical experts, and they can guide you. But that is a brief interaction. Basically, this is the interaction between the chief executive, the legal department, and the finance department of both the organization. A complex project may involve managing multiple contracts simultaneously or in sequence. In such cases, each contract lifecycle may begin and end during any phase of the project lifecycle. If you have got more than one contracts going on within a project, then they all have to happen during the project lifecycle. They cannot exceed the project lifecycle, or they all will be, as I said, the conduct procurements will happen in execution. When we are in execution of our project, all the contracts will be awarded during that period, no matter when.
It could be a long time throughout the life of the project. Within the project lifecycle, at any time, any project can be awarded, but giving enough time for the seller to complete the project. And in monitoring and control, we will be keeping a watch on that. According to the agreement or the contract we have signed, we would be auditing and inspecting, and then releasing their accepting their claims, releasing their payment, keeping their records, and all that. Depending on the application area, the seller may be identified as a contractor, vendor, service provider, or supplier. The buyer may be the owner of the final product or subcontractor, the acquiring organization, a service requester, or the purchaser. Seller can be viewed during the contract lifecycle first as a bidder. The seller, the person who is trying to get the contract, he is initially the bidder, then as a selected source, and ultimately as the contracted supplier or vendor. So this is the brief about uh, the procurement. The winning bidder may manage the work as a project. Now this is very interesting. You are running your project, and within your project, in the execution, you are actually giving away the project to us, to a seller. You are in execution, and that seller is receiving the contract. Once he has received the contract, his life cycle of the project will start. He, in within his own organization, may assign a project sponsor, who will assign a project manager, who will write a project charter of that portion of work, and who will run his own project life cycle. But that project life cycle of the contractor would be running within my life cycle of the larger project. I hope you understand this point. The buyer becomes the customer to subcontractor, supplier, service provider, and is therefore a key project stakeholder from the seller perspective. So, we are the customer for him. We, the buyer, are the customer for the contractor. Now, we have given him a contract. Now, he would be interacting with us for the purposes of his portion of work, which is his project, not our project. Our project is a bigger project. The seller's project management team may be concerned with all the processes involved in performing the work or providing the service, which has been assigned to them according to the agreement or the contract. Terms and conditions of the contract and the procurement statement of work become key input to many of the seller's management processes. The contract can actually contain the inputs like major deliverables, keystones, objectives, etc. The procurement statement of work may have other names such as technical statement of work, whatever you want to call it. But remember, people call it statement of work. I don't agree with that. There is nothing like, sorry, people call it scope of work. This is not scope of work. Statement of work is all about procurement. It is about, it is a brief statement about what we want to procure. That's it. This is a brief statement of what we want to procure. This is not the scope of work. The seller itself may become a buyer of lower tiered products. Maybe I have ordered a contractor uh, to do something for me, and his performance of his work, he may have to procure some raw material from even a third party. So this can very much be possible that he further outsources certain portions of his work to someone else. It is assumed that the buyer of an item for the project is assigned to the project team and is part of the larger organization. The seller is assumed to be providing services or material to the project, to our project, and is usually outside the performing organization. So, contractor is not us, is not amongst us, but he is working for us. So he is not within the performing organization, which is my organization, which has given him the contract. We are the performing organization. Seller is working for us. So he is not part of us, but he is doing some of our work in accordance with the contract. For some project, the seller role may be filled by a group or function that is part of the performing organization but external to the project. For larger, more complex projects, the seller may become part of an integrated project team after the contract is awarded.
For smaller organizations or startup companies and those without purchasing, contracting, or procurement department, project manager may assume the purchasing authority role to negotiate and sign contracts directly. You see, if your organization doesn't have that intricate a system where the purchasing department and all those things are existing, then in that case, project manager may handle everything for the project. Any procurement for the project, project manager has the authority then. In international contracting, the legal jurisdiction under which the contract will be administered are clearly spelled out in the contract. In most cases, the seller is an external contractor who is bound by a formal contractual relationship. Right. This is all about the general generally about the procurement. Now let us see what are the trends and emerging practices in procurement management as such. So first of all, advances in tools. There has been significant improvement in the development of tools to manage the procurement and implementation phases of a project. Online tools for procurement now give the buyers a single point where procurements can be advertised and provide sellers with a single source to find procurement documents and complete them directly online. Probably this is what we see in our country as well. Even for government projects, you see that there are websites available where all the contracts of the government projects, all the procurement documents are available there, and you anybody can bid for that. A lot many things have changed, and for the construction you might have seen there is a rising trend of BIM, building information model. So this is a software tool which has been shown to save significant amount of time and money in on projects using it. This approach can substantially reduce construction claims, thereby reducing both cost and schedule. Major companies and governments worldwide are beginning to mandate the use of BIM on large projects. So you see, these are the new trends, and not these trends have not come today. They might be in force for last many years, but yes, these things are rising trends. More advanced risk management. An increasing trend in risk management is to write contracts that accurately allocate specific risks to those entities most capable of managing them. No contractor is capable of managing all the possible major risks on a project. The buyer will be required to accept the risk that the contractors do not have control over, such as changing corporate policies in the buying organization, changing regulatory requirements, and other risks from outside the project. So it should be a very intricate process which should be able to allocate the risk between the buyer and the seller. And this is not something new. This has been in force for quite time immemorial for that matter. Like force majeure is something which the risk of which is not carried either by the buyer or the seller. This is the nature. If there is a war which breaks out, then both parties suffer and they will not fulfill the damages for each other. Changing contracting processes. There has been a significant growth in mega projects in the past several years, particularly in the areas of infrastructure development and engineering projects. Multi-billion dollar projects are now common. A large proportion of these involve international contracts with multiple contractors from many countries and are inherently more risky than projects using only local contractors. So this is the contracting process has also changed and it has gone kind of international. Logistics and supply chain are new. I won't say really a new topic. Supply chain is a very old topic, and logistics is even older than that. But yes, of course, the things are now better organized through supply chain and proper logistics, because so many large engineering, construction, infrastructure projects are done through multiple international contractors. The management of the flow of material becomes critical to successful completion. This is exactly what I was saying, just in time supply. That is actually supply chain. You only require those items which you want those items delivered which are actually required at that point in time, just in time. We don't want extra storage,
nor we want to wait for some item to be delivered. When I require an item, that must be available, and I should not uh, be, making a lot of storage. So reducing the storage space as well as, maintaining a good supply chain would solve the purpose. Technology and stakeholder relations. Publicly funded projects are under increasing scrutiny. A trend in infrastructure and commercial construction projects is the use of technology, including web cameras, and improved stakeholder communication and relations. During construction, one or more webcams are installed on the site with periodic updates to a publicly available website. Now, this is very interesting because when you are doing construction, whatever you do, that ultimately is hidden out into the walls or whatever. So when you make a fixture, when you perform something, you're pouring cement, you are, casting the steel bars or whatever. So you must take pictures of that, or there must be some video or something. Actually, the similar kind of a problem came to me from Army Housing Society, and they said that they have a problem. Uh, Although they are very disciplined, everything is properly documented, and there is no way that anything can go wrong. But they are amazed that when in a populated colony there is a pipeline to be fixed for sewerage or water, when they try to dig it out, they don't find it underground. And they can bet that they had installed that pipeline at that very place. So, what is the problem? Basically, the problem was that the decisions for changing the location of the pipeline were not taken at the appropriate level of change request. They were taken as the lowest level. The contractor who was made responsible for laying the pipeline, it was uh, his decision where he is laying the pipeline. Meaning what? On the map, it was supposed to be at a specific place, and at that specific place, there was some problem. Maybe there was a big stone in front of that, uh, in the line of the pipeline, or maybe there was some hindrance, and he decided to turn the pipeline from this point on and take it elsewhere. Although the things were connected ultimately, but pipeline is not actually where they expected it to be. So, first of all, everything should be properly managed through a change request. Number two, proper photographs should be taken at every stage, and they should be updated on some kind of a website. A video data or video, audio, and other kinds of documentary proofs could be available for future, references. Trial engagements. Not every seller is well suited for an organization's environment. Therefore, some projects will engage several candidate sellers for initial deliverable and work products on a paid basis before making the full commitment to a larger portion of the project scope. This accelerates the momentum by allowing the buyer to evaluate potential partners while simultaneously making progress on the project work. So this is also a very common thing when, we have very many times seen it that more than one software developers are hired by an organization for the same job, and they are simultaneously put on job, and whomsoever is performing the best is retained, and remaining two parties may be fired. Tailoring considerations. Because each project is unique, the project manager may need to tailor the way the project procurement management processes are applied. The considerations are, first of all, complexity of procurement. If if the procurement you are carrying out, the main procurement, are are there multiple procurements at different times with different sellers, that add to the complexity of the procurement. So how complex is your procurement? So if it is, a huge procurement, or a complex procurement due to higher number of small procurement. So what is the level of complexity? According to that, you may have to, tailor your needs. Physical location, where these procurements are to be done. Maybe if you say it's to be done on a very unreasonable place where nobody can reach,
Maybe you say that no, we want it in the right in the middle of the third desert or somewhere. So yes, of course it can be done, but naturally the cost and the everything will be dictated by the physical location. Governance and regulatory environment. Are local laws and regulations regarding procurement activities integrated with the organization's procurement policy? You see, the procurement policy will help you develop the contract, but procurement policy will have to abide by the local laws. You cannot develop a procurement policy or a contract which is in contravention with the local law. Availability of contracts. Are there available contractors who are capable of performing the work? As far as the agile and adaptive environments are concerned, in agile environments, specific sellers may be used to extend the team. Collaborative work relationship can lead to a shared risk procurement model where both buyer and seller share in the risk and rewards associated with the project. And this is called a partnership. When you are, you're changing the things and the things are flexible also, the both parties will take some share of the risk, and ultimately there is a kind of a partnership in which they mutually agree to change and progress. Large projects may use an adaptive approach for some deliverables and a more stable approach for other parts. In these cases, a governing agreement, such as a master services agreement, may be used for the overall engagement, with the adaptive work being placed in an appendix or supplement. This allows changes to occur on the adaptive scope without impacting the overall contract. So this could be, a very good guideline for those who are trying to develop this kind of a contract. Right. So far, so good. Any questions? Sir, no question. It was very clear. Probably पूरे इसके अंदर शायद कॉन्ट्रैक्ट्स में एक दो क्वेश्चंस निकले, अदरवाइज आई डोंट सी टू मेनी क्वेश्चंस कमिंग आउट ऑफ Okay. procurement. Okay. Wonderful. अच्छा जी, प्लान प्रोक्योरमेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया, ये तो मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ ये चीजें आपको कि इसमें ये क्या क्या इनपुट्स और आउटपुट्स हैं। प्लान प्रोक्योरमेंट्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनकी तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले प्लान प्रोक्योरमेंट्स में जब आप मेक और बाय डिसीजन कर लेते हैं ना, आफ्टर यू हैव डन द मेक और बाय डिसीजन, the very first thing you need to produce is the statement of work. A statement of work is the very first document which describes कि क्या करवाना है आपने, और ये नहीं पता कि किससे करवाना है, बट क्या करवाना है। इसको थोड़ा और आप डिटेल में कर लें तो उसको हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। मतलब स्टेटमेंट ऑफ वर्क बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके नतीजे में टर्म ऑफ रेफरेंस या आरएफपी और जितने भी प्रोक्योरमेंट के कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं वो इससे जन्म लेते हैं। सो इसी की रोशनी में हम बाकी चीजें बनाना शुरू करते हैं। फिर प्रिपेयर अ हाई लेवल कॉस्ट एस्टिमेट टू डिटरमिन द बजट। अपना इंटरनल बजट बनाएं, अपना कॉस्ट एस्टिमेट डिटरमिन करें, फिर आप इसे एडवर्टाइज करते हैं। लेकिन याद रहे कि अभी हम प्लान की बात कर रहे हैं, प्लान में एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट तो कंडक्ट में होती है, लेकिन यू विल प्लान फॉर एडवर्टाइजिंग। आप ये अपने प्लान में लिखेंगे कि अब ये चीज एडवर्टाइज कर दी जाए, ये इस तरह का अखबार का इश्तेहार बना के एडवर्टाइज किया जाए। अखबार का इश्तेहार प्लानिंग में बना के रख लेना है, भले वो आपने एडवर्टाइज एग्जीक्यूशन के दौरान अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर करना है, लेकिन आपने वो इश्तेहार बना के रख लेना है। शॉर्ट लिस्ट बना लीजिए क्वालिफाइड सेलर्स की, ये भी बड़ा मजेदार काम है। दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपको कोई नहीं पता कि किस किस्म के लोग बिड करेंगे, तो आपने ओपन रख दिया है मार्केट के लिए कि जो आना चाहता है आ जाए, लेकिन इसमें आपके लिए मुश्किल बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी। इसलिए अच्छे जो लोग होंगे उनके लिए बेहतर यही होगा कि पहले से मार्केट का सर्वे करके रखें कि जिस किस्म का काम आप करवाने जा रहे हैं कौन कौन से लोग हैं जो इसके अंदर मलका रखते हैं और जो बिड कर सकते हैं, और उनमें से सबसे अच्छे कौन से हैं। सो दिस कुड बी अ शॉर्ट लिस्टिंग और क्वालिफाइड सेलर्स की एक लिस्ट आपके पास आ जाए। इससे भी अच्छा तरीका ये है कि अगर आपसे कि एक ही तरह का काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आप एमईएस वाले हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले, उनको तो हर वक्त काम ही कर रहे होते हैं, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम उनका मुसलसल जारी होता है पूरे पाकिस्तान में। तो होता यह है कि उन्होंने एक कैटेगराइजेशंस बना रखी हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी।
वो इन 3 कैटेगरीज में दे वेलकम एनी कॉन्ट्रैक्टर टू कम एंड गेट रजिस्टर्ड। उसकी कुछ शरायत होती हैं, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस हो, इतने, और वो जो कैटेगरीज हैं वो हैं आपके, एक सीलिंग है कि इस इतने से इतने बजट तक के प्रोजेक्ट जो है कैटेगरी ए में आएंगे, इतने से इतने तक के कैटेगरी बी में आएंगे, और इतने से इतने तक के कैटेगरी सी में आएंगे, और उसको वो ठीक ठोक बजाकर उन लोगों को चेक कर लेते हैं और उन लोगों को उस लिस्ट में डाल देते हैं। अब उनको ये परेशानी की जरूरत नहीं है कि हमें क्वालिफाइड सेलर ढूंढना है। अब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी ए का आएगा, वो इन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाएंगे, उस इलाके के जो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उस कैटेगरी के, उनको बुलाएंगे और उन्हें कहेंगे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोग बिड डालना चाहते हैं डाल दें। तो कहने का मतलब है इसमें हमें ओपन बिडिंग करवाने की भी कोई अखबार में देने की भी जरूरत एज सच नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर नॉर्मली कोर्ट में इसकी ये ऑब्जेक्शन अमूमन लगता है, ऑल्दो लॉ ये कहता है, कानून ये है कि अगर आपने शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है तो आप उन्हीं में दे सकते हैं और उनको आप अखबार में चाह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा लकूना है तो फिर नॉर्मली अदालत ये कह देती है कि नहीं, आपको अखबार में देना चाहिए, तो उस सूरत में लोग एहतियातन अखबार में भी दे देते हैं, और बल्कि उसमें ये भी लिख देते हैं कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड सेलर्स कैन अप्लाई। तो वो दोनों की शर्तें पूरी हो जाती हैं, अदालत की भी और जो इनकी अपना पॉलिसी थी वो भी। फिर जनाब आप जो, जब वो सेलर्स को आप इनवाइट करते हैं शॉर्ट लिस्ट, सॉरी, जब आप उन्हें इनवाइट करते हैं तो वो बिड डॉक्यूमेंट्स लेने आते हैं। तो बिड डॉक्यूमेंट्स आपने पहले बना के रखे हैं प्लानिंग में, तो जो प्लानिंग में बना के रखे हैं वो बिड डॉक्यूमेंट उस वक्त दिए जाएंगे जब वो लोग लेने आएंगे। उसके बाद वो उनकी बिड कॉन्फ्रेंस भी उसी टाइम के अंदर होगी। अच्छा, मैं दोनों चीजें मिक्स कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग की बातें भी बताता जा रहा हूँ और जो एग्जीक्यूशन की बातें हैं जो होनी है वो भी बताता जा रहा हूँ। कागजात सारे प्लानिंग में बने हैं इन सारी चीजों के, लेकिन एक्चुअल जो एक्शन हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जो बातचीत हो रही है, जो निगोशिएशन हो रही है, जो अखबार का इश्तेहार एक्चुअली ऑन ग्राउंड दिया जा रहा है, दिस ऑल इज हैपनिंग इन कंडक्ट प्रोक्योरमेंट। सो जो प्लान किया था वही कंडक्ट हो रहा है। फिर जनाब आपने बिड डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, फिर उन्होंने अपने प्रपोजल सबमिट करवाएंगे। वो जब वो सबमिट करेंगे तो आपने ये प्लान करके रखना है कि जब जो कोई भी प्रपोजल आएंगी उनको हमने एवेलुएट कैसे करना है, टेक्निकल एवेल्युएशन कैसे होगी, दूसरी कैसे होगी, उसमें से क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, कॉस्ट एवेल्युएशन कैसे की जाएंगी, फाइनल आपकी कंबाइंड एवेल्युएशन कैसे होगी, और कैसे विनिंग प्रपोजल डिसाइड होगी। ये जो आपने कहानी लिख दी है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान में, इसी के तहत आगे चलकर वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए जाने हैं। उसमें फिर लाजमी बात है फाइनलाइज करते हैं आप नेगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हैं बायर सेलर का। तो ये सारे इकदामात जो हैं इनके ऊपर चलना है, और इनके ऊपर चलने के लिए जो कागजात बनाने हैं इस पूरे सीक्वेंस के काम के लिए, वो सब के सब पहले ही प्लानिंग में बना लिए जाते हैं। और इन चीजों पे अमल दरामद कहाँ होता है, जाके एग्जीक्यूशन में। The requirements of the project schedule can significantly influence the strategy during the plan procurement management process. Decisions made in developing the procurement management plan can also influence the project schedule. अब जो कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वो तो लाजमी बात है कि दोनों पार्टियों की शराइत के मुताबिक होगा, और जरूरी नहीं है कि जो आपने एक ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा था वो सारी शर्तें आपकी मानी जाएंगी। आपने जो बनाया था वो तो अपने स्केड्यूल और अपने प्रोजेक्ट को मद्देनजर रख के बनाया था। जो कॉन्ट्रैक्ट आपका असल में साइन होने जा रहा है वो उसके अंदर कुछ शराइत चेंज होगी, जिसकी वजह से आपके मेन प्रोजेक्ट का स्केड्यूल या कॉस्ट इंपैक्ट हो रही, तो हमें वो चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। जो आपका डेवलप स्केड्यूल प्रोसेस है, एस्टिमेट कॉस्ट, रिसोर्सेज हैं और बाकी तमाम चीजें, उनको वो उससे इफेक्ट होने का इम्कान है। अच्छा जी, इसमें जो इनपुट्स वगैरह हैं वो तो खैर कोई ऐसी चीज नहीं है। आई डोंट थिंक इसमें पहले प्रोसेस में और कोई, हाँ ये जनाब टूल जिसके इंटरेस्टिंग है इनको जरा एक नजर देख लेते हैं। राइट, ओके, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरा ख्याल है ये आपको पहले से अंदाजा होगा। एक होते हैं जी फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं कॉस्ट रीएम्बर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक होते हैं टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इनकी आगे भी टाइप्स हैं,
पहले हम जनरली देख लेते हैं कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। बात ये थी कि जिसके ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनके अंदर रिक्वायरमेंट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर, द स्कोप इज वेरी क्लियर, मुझे पता है मैंने क्या बनवाना है, तो उस सूरत में मैं ये कहता हूं कि जनाब आप मुझे ये बताएं कि ये काम मेरा करेंगे कितने में, और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स जितनी तफसील में बताई जा सकती है एक दफा बता दी, और मुझे श्योर होना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट में ज्यादा तब्दीली का इम्कान नहीं है। ऐसी सूरत में मैं उससे कॉन्ट्रैक्टर से एक फर्म फिक्स प्राइस पे डन कर लेता हूं कि जी बस ठीक हो गया जी, ये हमारे दरमियान एग्री हो गया, मैंने आपको इतने पैसे देने हैं, अब वट कम में। अभी ये कहते हैं जी डॉलर की कीमत गिर गई, बढ़ गई, कुछ हो गया, मगर हमारी तो जनाब डील है फर्म फिक्स प्राइस के ऊपर, और पैसा आपने लगाना है, मैंने तो जनाब सिर्फ आपको पेमेंट करनी है, और उसके लिए बेशक आप कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करनी है कितनी पेमेंट शुरू में करनी है, कितनी बाद में करनी है, लेकिन मैंने तो बस वही पेमेंट करनी है, और आपने तो वही चीज डिलीवर करनी है जो हमने एग्री की थी। अब जो मर्जी हो जाए, सारा रिस्क जो है मैंने उसके कंधों पे रख दिया कॉन्ट्रैक्टर के। अगर वो से कि उसने अच्छा मार्जिन रखा हुआ था और उसने सारे रिस्कों को कैटर किया हुआ था, तो वो मजे करेगा। और अगर वो रिस्क कोई ऐसा आकर हो गया जो जिसका मुझे अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है और मैं नहीं संभाल सकूंगा, तो अब कौन संभालेगा? अब वो संभालेगा, अब मैं नहीं संभालूंगा, क्योंकि मैंने वो सारे का सारा रिस्क अपने कंधों से उतार के उसके कंधों पर डाल दिया। तो इसको कहते हैं जी फर्म फिक्स प्राइस। फर्म फिक्स प्राइस जो है ये पहली टाइप है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रैक्ट टाइप। इट इज फेवर्ड बाय मोस्ट बाइंग ऑर्गेनाइजेशन because the price for goods is set at the outset and not subject to change unless the scope of work changes। और स्कोप ऑफ वर्क अगर चेंज करना है तो मेरे लिए क़यामत आ जाएगी, मतलब बायर के लिए क़यामत आ जाएगी, क्योंकि जब वो कहेगा कि नहीं भाई ये जो एग्री हुआ था हमारा वो तो हुआ था, लेकिन ये बराए मेहरबानी फलानी चीज जरा तब्दील कर दो, तो अब वो जनाब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। जो आपका सेलर है वो कहेगा नहीं जी चेंज कराना है तो इसके तो इतने पैसे लगेंगे, सो नाउ ही विल डिक्टेट हिज टर्म्स। फिर आ जाता है जी फिक्स प्राइस इंसेंटिव फी। फिक्स प्राइस इंसेंटिव फी का मतलब है कि मैं काम तो फिक्स प्राइस पे करा रहा हूं, लेकिन मैं ये कोई बेनिफिट चाह रहा हूं सेलर से, मैं उसे चाह रहा हूं कि जरा वो तेज काम करे या अच्छा काम करे या अच्छी क्वालिटी का काम करे या वट एवर। सो जो कोई भी मैं उससे अच्छा चाह रहा हूं, बेनिफिट लेना चाह रहा हूं, मैं उसको कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव दूंगा कि भाई अगर तुमने अच्छा काम किया या जल्दी काम किया तो तुम्हें मैं इतने पैसे एक्स्ट्रा दूंगा। दिस इज कॉल्ड फिक्स प्राइस इंसेंटिव फी। कि फिक्स प्राइस तो मैं दे ही रहा हूं ना जो उसे दे रहा हूं, लेकिन उसके अलावा मैं उसको कोई इनाम या इंसेंटिव दूंगा। असल इनाम में और इंसेंटिव में थोड़ा फर्क है। इंसेंटिव पहले से डिफाइंड होता है और इनाम होता है वो पहले से डिफाइंड नहीं होता कि कितना होगा। सो इंसेंटिव मैंने उसे दिया। तीसरा, नॉर्मली जब जैसे हमारे पाकिस्तान में है तो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पॉलिटिकल और बाकी हालात जो हैं उसकी वजह से, तो ऐसी कंट्रीज के अंदर रिस्क जहां हाई होता है वहां पे आपकी डॉलर प्राइस में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई है, काम भी कोई नहीं करने आता बाहर से। तो ऐसी सूरत में जो इवन लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो फर्म फिक्स प्राइस पे काम करना पसंद कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मतलब अपना डेथ वारंट साइन कर लेंगे। तो द ओनली वे दे कैन गो फॉर फिक्स प्राइस इज कि हम उनके साथ ये वादा करें कि हम उनको इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट देंगे। मिसाल के तौर पे हम उन्हें कहेंगे कि भाई अभी जिस वक्त तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस वक्त जो डॉलर पैरिटी थी, रुपी डॉलर पैरिटी जो थी, उसके हिसाब से हम तुम्हें तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अमाउंट को एडजस्ट कर देंगे। या फॉर दैट मैटर आसान काम ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही डॉलर्स में कर लेते हैं, तो डॉलर अगर ऊपर नीचे होगा तो वो कहेंगे जी हमें तो बस डॉलर में पेमेंट करें, जैसे आपके साथ ये आईएमएफ वाले करते हैं, चाइना वाले करते हैं, बाकी लोग करते हैं। तो ये ड्रामा बड़ा मजेदार है कि वो आपसे बात ही डॉलर में करते हैं, वो कहते हैं हमें इस बात से लेना देना कुछ नहीं कि तुम्हारी करेंसी क्या है और वो क्या करती है, लेकिन हमें तो हमारी करेंसी में बात करो हमारे साथ, और बाकी तुम डूबो या मरो जो मर्जी करो। तो मतलब ये है कि बहुत सारा रिस्क हमें अपने कंधे पे उठाना पड़ जाता है।
लेकिन इकोनॉमिक प्राइस एडजस्टमेंट इज अ डूएबल थिंग इन सच काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। फिर है जी कॉस्ट रिइंबर्सिबल, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसके अंदर ये होता है कि मैं कोई इंजीनियरिंग फर्म नहीं मैंने हायर की जिसको मैंने कहा जी मेरा घर मुझे बना दो, बल्कि मैंने एक ठेकेदार हायर किया है जिसके अपने कोई रिसोर्सेज नहीं है, उसको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा घर बना दो। वो कहता है जी कि ठीक है मैं आपका घर बना दूंगा, जो माल लगेगा, जो मसाला लगेगा, जो मटेरियल लगेगा, जो ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, उसके पैसे आप नहीं देने। तो आप ये गौर कीजिए कि कितना ज्यादा रिस्क तो मेरे पे ही आ पड़ा कि जिस प्राइस पे वो चीज मार्केट में उस दिन होगी मुझे तो वो पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है जो बायर है वो डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है माल की। और as far as this person is concerned, who is integrating the whole thing and who is doing getting this job done for you, इसको अलग से चार्ज, इसको मैंने अलग से पैसे देने हैं। तो कॉस्ट रीइंबर्सेबल तो वो पोर्शन है कि जो खर्चा होता जाएगा वो मुझसे बिल पेश करता जाएगा और मुझसे पैसे लेता जाएगा, ये कॉस्ट उसको रीइंबर्स होती चली जाएगी। और इसके अलावा उसका अपना कुछ खाता होगा। इसमें जनाब पहला है कॉस्ट प्लस फिक्स फी। वो कहते जी जो भी कॉस्ट आएगी वो तो आप देना, लेकिन मैंने आपको इस घर बनाने के 10 लाख रुपए आपने मुझे पे करने हैं। अब 10 लाख रुपए भले वो उस घर में ज्यादा पैसे लग जाएं या कम पैसे लग जाएं, मैंने उसको 10 लाख रुपए देने हैं अगर उसने ये घर बना दिया तो। बात यह कि उसको क्या जल्दी है कि वो आपके कम पैसे लगवाए या आपका काम जल्दी करके दे, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। उसका एक ही इंटरेस्ट है कि मेरे तो 10 लाख रुपए मुझे मिलने। अब वो उसका अपना जाती इंटरेस्ट हो सकता है कि वो जल्दी कमाना चाहता है तो वो जल्दी काम करना कर ले या जो भी कोई तरीकाकार करे, लेकिन कॉस्ट प्लस फिक्स फी डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंसेंटिव टू डू द जॉब बेटर। इट इज जस्ट अ फिक्स फी। तो इसके अंदर ना उसका कोई फायदा है ना नुकसान है, वो कहता है ठंड से काम करूंगा। कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी एक और टाइप है। इसमें जैसे हमने पहले वाले केस में भी इंसेंटिव दिया था फिक्स प्राइस के अंदर, यहाँ पे हम कॉस्ट प्लस तो कर ही रहे हैं, मतलब जो पेमेंट्स आ रही हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, बिल तो पे कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करने के ऊपर उसे इनाम या इंसेंटिव दे रहे हैं। इनाम नहीं इंसेंटिव दे रहे हैं। पहले से अनाउंस है कि अगर तुम ये काम इतनी तेज करोगे या इतना अच्छा करोगे तो हम तुम्हें इतने परसेंट या इतना पैसा या कोई भी अमाउंट वो हम तुम्हें इंसेंटिव में देंगे। नॉर्मली इसको हम परसेंटेजेस में कर लेते हैं या फिक्स प्राइस फिक्स भी अमाउंट कर दी जाती है। तो इंसेंटिव फी आपको मिलेगी इस काम को करने की। अच्छा जी, ये इससे बड़ा लोग इनकरेज होते हैं क्योंकि वो फिर उतनी ही ज्यादा मेहनत करेंगे जितना उन्हें इनाम मिलेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। कॉस्ट प्लस अवार्ड फी एक और तरीका है। इसके अंदर आप उसे इनाम देते हैं, इसमें आप उसे इंसेंटिव नहीं देते, पहले से नहीं बताते कि तुम्हें क्या मिलेगा। अगर उसे इतना पता होता है कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे कोई इनाम मिलेगा, जो बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेलर को अपनी कॉस्ट तो रिइंबर्स हो जाएगी, मगर बट द मेजोरिटी ऑफ द फी इज अर्न्ड बेस्ड ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टन ब्रॉड सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। तो मतलब ये है कि वो उसकी पूरी एवेल्युएशन होती है कि जनाब तुमने अच्छा फलाने काम में कैसे थे, फलाने में कैसे थे, उसके हिसाब से उसकी अवार्ड फी जो है वो डिसाइड की जाती है, वो उसको फिर रिलीज होती है। ये हो गया जी कॉस्ट रिइंबर्सिबल। और भी टाइप्स बनती हैं कॉस्ट रिइंबर्सिबल में। एक को कहते हैं जी कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। वो सबसे गंदा है। कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो बिल्स हैं वो तो पे करेगा ही करेगा, लेकिन जितने बिल आएंगे टोटल प्रोजेक्ट में उसका 10% उसकी फीस होगी। तो मतलब ये तो इतना बुरा है कि ये तो आपका कॉन्ट्रैक्टर ये कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके पैसे खर्च करे ताकि उसका 10% ज्यादा बन जाए। बट दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप्स। तीसरा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जी टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम फिक्स प्राइस एंड कॉस्ट रिइंबर्सिबल, बिकॉज फिक्स प्राइस और कॉस्ट रिइंबर्सिबल दोनों लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। टाइम एंड मटेरियल शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। ये छोटी असाइनमेंट्स के लिए, जब हम किसी को महदूद मुद्दत के लिए एम्प्लॉय करते हैं, किसी काम के लिए को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ये टाइम एंड मटेरियल में आता है। इसके अंदर कंसल्टेंट्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आ जाते हैं, 1 महीने 2 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए हमने किसी को हायर किया। या कभी कभी जब हमारे पास वर्क फोर्स में कमी वाकया हो जाती है, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वर्क फोर्स में मिल नहीं रही होती, तो हम
पर डे बेसिस के ऊपर मजदूर उठा लेते हैं या वर्कर्स उठा लेते हैं और उनको हम टाइम एंड मटेरियल बेसिस के ऊपर पे करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे 2 प्रोग्रामर चाहिए 2 दिन के लिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ हाँ जी क्या रेट है आपका, वो कहते हैं जी हमारा पर डे इतना रेट है। हम कहते हैं ओके ये रेट आपको मिलेगा, यहाँ पे आप 2 दिन बैठेंगे, यहाँ पे जितना सामान है जो आपको इस काम को करने के लिए दिया जाएगा, इस काम को करने के लिए कागज पेंसिल कंप्यूटर जो कुछ भी है वो मटेरियल हमारा होगा, आप इसके ऊपर 2 दिन काम करेंगे, अपना टाइम देंगे, टाइम के पैसे आप हमसे ले लें, एंड दैट्स इट। सो दिस इज टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। फिर जनाब इसके जो दूसरे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसके अंदर डाटा गैदरिंग आ जाती है, एक्सपर्ट जजमेंट है। डाटा गैदरिंग को एक नजर देख लीजिए। डाटा गैदरिंग टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू द मार्केट रिसर्च। मार्केट को, ये मैंने आपको भी बताया भी था ना कि आप मार्केट में देखते हैं कौन कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं। इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिक सेलर कैपेबिलिटीज। Procurement teams may leverage information gained at conferences, online reviews, and a variety of sources to identify market capabilities. The team may also refine specific procurement objectives to leverage maturing technologies while balancing risks associated with the breadth of sellers who can provide the desired materials or services. डाटा एनालिसिस में आपकी वही मेकर बाय एनालिसिस सबसे बड़ा डाटा एनालिसिस है आपका। और ना सिर्फ मेकर बाय एनालिसिस बल्कि इधर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मेकर बाय एनालिसिस जब आप कर लेते हैं और आप कहते हैं कि यार ये चीज तो लेनी है हमने किसी से, अब आगे कभी कभी एक और डिसीजन भी आ जाता है और वो होता है कि ये जो चीज हम ले रहे हैं इसको बाय करें या लीज करें। बाय या लीज डिसीजन आ जाता है उसके बाद। अगर हमने कहा ना कि ये चीज बाय करनी है, खुद नहीं बना सकते, बाय करनी है, अब बाय करने में भी 2 ऑप्शन आ जाती हैं कि बाय करें या लीज करें, वो भी एक एनालिसिस है। इसी तरह मेक और बाय एनालिसिस जो है वो तो आपने कॉस्ट बेनिफिट जो पढ़े थे सारी चीजें वो सब यहाँ अप्लाई करती हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सब कुछ जो आपने कॉस्ट में पढ़ा था, दैट ऑल एनालिसिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। सोर्स सिलेक्शन को जब एनालाइज करना होता है तो आप लाजमी बात है कि एक तो ये देखते हैं कि कौन कम कीमत में दे रहा है, किसकी क्वालिफिकेशंस कैसी हैं, फिर क्वालिटी कौन बेहतर दे सकता है, टेक्निकल प्रपोजल किसका ज्यादा अच्छा है, क्वालिटी और कॉस्ट की बेस के ऊपर आप मेथड इस्तेमाल करते हैं। अलाउज कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड एज अ फैक्टर, एक फार्मूला बना लेते हैं कि इतने परसेंट कॉस्ट के नंबर, इतने परसेंट क्वालिटी के नंबर, तो वो मिला जुला के उस फार्मूले से आप डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि कौन इस स्केल के ऊपर बेहतर है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज आप लेना चाहते हैं वो कोई एक ही पार्टी बना रही है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी बोइंग का जहाज चाहिए हमें, तो बोइंग ही बना रहा है ना, और दुनिया में कौन बना रहा है, बोइंग का चाहिए तो बोइंग ही बना रहा है। तो जो चीज मुझे चाहिए वो उसका सोर्स एक ही है, तो उसके लिए प्रोविजन एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है, वो चीज ली जा सकती है। लेकिन उसके लिए बायर आस्क अ स्पेसिफिक सेलर टू प्रिपेयर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल विच आर देन नेगोशिएटेड। मतलब इसके अंदर वो कोई कंपटीशन नहीं है। सिंस देयर इज नो कंपटीशन, दिस मेथड इज एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन प्रॉपरली जस्टिफाइड एंड शुड बी व्यूड एज एन एक्सेप्शन। तो ये चीज आपके लोकल लॉ में भी मौजूद है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके लिए बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती हैं, क्योंकि अक्सर केस कोर्ट में चले जाते हैं, कोई ना कोई कंपटीटर खड़ा होके ये कह देता है कि जनाब ये इस तरह की चीज तो हम भी बनाते थे, हमसे क्यों नहीं ली, हम तो इसे आधी कीमत में दे रहे थे। तो फिक्स बजट जनाब, फिक्स बजट मेथड रिक्वायर्स डिस्क्लोजिंग द अवेलेबल बजट टू इनवाइटेड सेलर्स। हम उसे बता दें हमारे पास इतना पैसा है, आरएफपी में बता देते हैं, एंड सिलेक्टिंग द हाईएस्ट रैंकिंग टेक्निकल प्रपोजल, और जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन देने को तैयार होता है उस पैसे के अंदर, उसको हम कहते हैं आ जाओ। फिर मीटिंग्स वगैरह का भी इसमें इस्तेमाल है जी। फिर आउटपुट्स में हमारा प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान है विच विल इंक्लूड हाउ प्रोक्योरमेंट विल बी कोऑर्डिनेटेड विद अदर प्रोजेक्ट एस्पेक्ट्स, टाइम टेबल ऑफ की प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज क्या होगा, प्रोक्योरमेंट को नापा तोला कैसा जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज कैसे होंगे, स्टेक होल्डर्स के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट्स, इसमें अथॉरिटी किसकी होगी, क्या हिसाब किताब होगा, कंस्ट्रेंट्स और assumption दैट कुड अफेक्ट प्लान प्रोक्योरमेंट्स, लीगल जुरिस्डिक्शन किसकी है, करेंसी कौन सी होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर इंडिपेंडेंट एस्टिमेट विल बी यूज्ड एंड वेदर दे आर नीडेड
as evaluation criteria. Risk management issues, including identify requirements for performance bonds or insurance contracts वगैरह, प्री क्वालिफाइड सेलर्स हैं या नहीं हैं, ये सब बातें आपकी प्रोक्योरमेंट प्लान में आ जाएंगी. फिर जनाब आपकी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी है. Once the make or buy analysis is complete and the decision is made to acquire from outside the project, a procurement strategy should be identified. The objective of procurement strategy is to determine the project delivery method, the type of legally binding agreement, and how the procurement will advance through the procurement phase. So delivery method क्या हो सकता है, are different for professional services वर्सेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे अब जिसमें आपने ट्रेनिंग दे दो, कोई और काम कर दो, कोई सर्विस लगा के चले जाओ. डिलीवरी मेथड इंक्लूड बायर सर्विस प्रोवाइडर, बायर ऑब्लिक सर्विसेज प्रोवाइडर विद नो सब कॉन्ट्रैक्टिंग, बायर सर्विस प्रोवाइडर विद सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलाउड. मतलब ये जो हम बात कर रहे थे ना कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने आगे उसमें से किसी और को दे दिया, उसने किसी और को दे दिया, तो कुछ में तो ये अलाउड होता है कि आप आगे फर्दर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं, कुछ में नहीं अलाउड होता. कुछ में वेंचर वेंचर जॉइंट वेंचर्स होते हैं बायर और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान, और कुछ में जो है वो सर्विस प्रोवाइडर एक्ट, बायर और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव या पार्टनर के तौर पे बिहेव करते हैं. For industrial or commercial construction project delivery, methods include but are not limited to turnkey systems होते हैं जो आप कहते हैं डिजाइन करो और बिल्ड कर दो. डिजाइन बिड और बिल्ड है, डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट है, डिजाइन ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर है, और इस तरह के बहुत से तरीके हैं. तो मिसाल के तौर पे ये डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट, इस चीज को डिजाइन करो, इसको बनाओ और इसको चलाओ और चलती हालत में हमें देके चले जाओ. बीओटी का मतलब ये होता है कि बिल्ड करो, और मतलब हमारी जमीन ले लो, इसके ऊपर एक बिजनेस बिल्ड करो, और उसको तुम, तो यू विल बी डिक्लेयर्ड ओनर, यू विल ऑपरेट इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल 20 साल उस जमीन के ऊपर वो बिजनेस आपको एक तरह से लीज पे मिल गया है, आप उसको करें, उससे कमाएं, और 20 साल बाद आप वो हमें ट्रांसफर करके अलॉन्ग विद ऑल द फैसिलिटीज, चलती हालत में वो आप हमें ट्रांसफर करके चले जाएं. ये गवर्नमेंट के लिए बड़े मजेदार मॉडल्स हैं, लेकिन अब आई डोंट नो ये क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये तो दिस इज सो सिंपल. मतलब जैसे अभी ये आप कहते हैं जी ऑरेंज ट्रेन, फलाना ड्रामा फलाना ड्रामा, एक पैसा कॉम का लगाए बगैर, एक टके की का कर्जा लिए बगैर हम ये सारा सब कुछ मुफ्त में कर सकते थे. 100% फ्री हम ये काम कर सकते हैं. सिर्फ हमको नेगोशिएटर अच्छे होने चाहिए. हम पकड़ के हर किसी के सामने जो सजदा रेज हो जाते हैं, उसकी वजह से हम अच्छे कॉन्ट्रैक्ट नहीं डील करते. कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट की क्या टाइप्स हैं जी? कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट टाइप्स आर सेपरेट फ्रॉम द प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड and are coordinated with the buying organization internal financial system. They include but are not limited to these contract types plus variations. लमसम पेमेंट भी होती हैं, फर्म फिक्स प्राइस भी होती हैं, कॉस्ट प्लस अवार्ड होता है, कॉस्ट प्लस इंसेंटिव होता है, टाइम एंड मटेरियल है, टारगेट कॉस्ट है, वगैरह वगैरह. फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स आर सुटेबल व्हेन टाइप ऑफ वर्क इज प्रिडिक्टेबल. वही मैंने कहा ना, स्कोप क्लियर है, चेंजेस नहीं आनी, तो फिक्स प्राइस कर लें. कॉस्ट प्लस उस वक्त बेहतर है जहां तब्दीलियां बहुत ज्यादा आनी और काम लंबा है, और टाइम एंड मटेरियल उस वक्त सुटेबल है जब काम छोटा है. प्रोक्योरमेंट की फेजेस, प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी कैन आल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन प्रोक्योरमेंट फेजेस, और वो क्या हो सकती हैं? पहले सीक्वेंसिंग और फेजिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच फेज एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच फेज. प्रोक्योरमेंट की परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स क्या होंगे और उसके माइलस्टोन क्या होंगे. क्राइटेरिया फॉर मूविंग फ्रॉम फेज टू फेज. मॉनिटरिंग एंड evaluation प्लान फॉर ट्रैकिंग द प्रोग्रेस. ये प्रोक्योरमेंट के हवाले से बात हो रही है. जो प्रोक्योरमेंट का जो आउटसोर्स आपने कर दिया ना काम, ये उसकी फेजेस है. प्रोसेस फॉर नॉलेज ट्रांसफर फॉर यूज इन द सब्सिक्वेंट फेजेस. जो लेसन लर्न आपने उठा के यहाँ से आगे लेके जाने हैं, वो कौन से. बिड डॉक्यूमेंट्स में आपके बहुत से किस्म के डॉक्यूमेंट है, चंद एक यहाँ लिस्टेड है. RFI, RFQ, RFP, मेरा ख्याल है आप इसे वाकिफ होंगे. RFI का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. जब हमें किसी चीज के बारे में वेंडर से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन ये कमिटमेंट कोई नहीं होती कि हम आपसे अगर इंफॉर्मेशन मंगा रहे हैं तो हम आपसे चीज लेंगे भी कि नहीं लेंगे. दिस इज गुड विल में होता है. इज यूज्ड व्हेन मोर इंफॉर्मेशन ऑन द गुड एंड सर्विसेज टू बी एक्वायर्ड इज नीडेड फ्रॉम द सेलर. उसने बिड जमा कराई है, फर्ज करें, मैं कहता हूँ नहीं यार इसके बारे में और बताओ,
ये भी हो सकता है। और ऐसा भी मुमकिन है कि मैं एट रैंडम, जिसने मुझे पहले कोई बिड जमा नहीं भी कराई हुई, मैं किसी भी वेंडर को लिख सकता हूँ कि जी बराए मेहरबानी आप जरा हमें इस बात के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और इसकी एक और किस्म भी होती है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उस वक्त मांगा जाता है जब मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही बहुत कम पता है, नई कोई टेक्नोलॉजी है, समझ कोई आ नहीं रही है, तो हम क्या करते हैं कि हम मार्केट में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड फ्लोट कर देते हैं और उनसे लोगों से कहते हैं कि आप सजेस्ट करें, अपना इंटरेस्ट शो करें और आप सजेस्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए। उससे हम एजुकेट होते हैं और जब हम एजुकेट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम कोई RFP RFQ बनाते हैं। और RFI पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। RFP RFQ फ्लोट करने के बाद होगी तो एक्सप्लेनेशन के लिए होगी, पहले होगी तो वो तकरीबन EOI वाला मोड में होगी कि मैं किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन सीख करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कोटेशन उस सूरत में जब मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ, जब गुड्स मैं ले रहा हूँ किसी से, या बना बनाया कोई चीज ले रहा हूँ जिसके अंदर स्कोप में ज्यादा वेरिएशन ना हो, अपेरेंटली क्लियर स्कोप हो, तो मैं कोटेशन मांग लेता हूँ कि अच्छा जी मैंने ये एसी खरीदना है, इसी मॉडल का हो, इसी कंपनी का हो, जैसे वो बोइंग की बात कर रहे थे। तो फिर मुझे उसमें क्या है, मुझे कोई भी दे दे, जो मुझे सस्ता देगा मैं उसे ले लूंगा। तो ऐसी मैटर्स में बहुत ज्यादा टेक्निकली चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसी तरह कोटेशंस में ही कुछ कभी कभी जब मुझे ये नहीं पता होता कि मैंने कौन सा एसी लेना है, मुझे बस ये पता होता कि यार कोई कमरे में कोई एसी लगाना है। अब वो एसी तो वॉल एसी भी हो सकता है, दूसरा एसी, तीसरा एसी, 10 किस्म के एसी होते हैं। अब वो हर एक की अलग अलग करेक्टरिस्टिक, अलग अलग हिसाब किताब है, तो वो मुझे फिर थोड़ी टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए, मगर इसको भी हम कोटेशन में हैंडल कर लेते हैं। लेकिन एक और मसला, जब जब हमें कोटेशन नहीं चाहिए बल्कि हमारा स्कोप बहुत वाजे नहीं है, हमें हमें कोई प्रोडक्ट या डिलीवरेबल नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए। हमें एक प्रॉब्लम है और हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे प्रॉब्लम यह है कि मैंने इस कमरे के अंदर एक ऐसा सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट रखना है जिसकी कुछ खास कंडीशंस है। इसको इतने से ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं रखा जा सकता, इसकी ह्यूमिडिटी इससे कम ना होने पाए, और फलानी चीज इतनी ना होने पाए। अब मुझे नहीं पता कि इधर कौन सा एसी चलेगा और क्या चीज चलेगी, कौन कैसे टेम्परेचर कंट्रोल होगा। तो मैं कहता हूँ यार ये मेरा प्रॉब्लम है, तो मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन दो जो ये कंडीशंस पूरी कर दे। तो अब इसमें मैं प्रपोजल मांगूंगा और लोग अपने अपने सोल्यूशन पेश करेंगे। अब जरा जरूरी हो गया कि क्योंकि रंग बिरंगे सोल्यूशन आएंगे, तो अब ज्यादा जरूरी है कि मैं टेक्निकल को अलग एवेल्युएट करूं और फाइनेंशियल को अलग करूं। पहले जो था, मैंने कहा था कि अगर खाली मैंने एसी, पता है मुझे एसी लेना है, तो मैं कहता अच्छा चलो यार टेक्निकली मैं एवेल्युएट कर लेता हूं, लेकिन फाइनेंशियल भी सामने रखी होती है, और उसके बाद मैं उन दोनों को मिला के अपना फैसला देता हूं। लेकिन अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब प्रपोजल आ रही है तो मैं फाइनेंशियल को देखता भी नहीं हूं, मैं टेक्निकल को देखता हूं सिर्फ, और टेक्निकल की बेस पे मैं शॉर्ट लिस्टिंग करता हूं। और जो लोग टेक्निकल में शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, उनका उनकी फाइनेंशियल प्रपोजल खोले बगैर वापस कर दी जाएंगी। ओनली दोज हु क्वालिफाई इन टेक्निकल, उनकी फाइनेंशियल प्रपोजल्स खोली जाएंगी और उनके बाद फिर उन दोनों को मिला के कोई फैसला सुनाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। सो हम इनमें क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस रिक्वेस्ट के नतीजे में वो हमें या तो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आएगी, ऑपरेशन कोटेशन है तो कोटेशन आएगी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है तो प्रपोजल आएगी, रिक्वेस्ट फॉर बिड भी होती है जिसे हम इनविटेशन फॉर बिड कहते हैं। इनविटेशन फॉर बिड होगी तो मुझे बिड डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आप ये जरा बात समझिए, मुझे जो भी चीज मैं मांग रहा हूं, जिसकी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे देने पड़ेंगे और वो चीज मुझे फिर जमा कराएगा। मैं इनविटेशन फॉर बिड कहता हूं तो मुझे बिड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे और वो बिड डॉक्यूमेंट्स को भर के वो मुझे जमा करवाएगा। इसी तरह रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में मैं प्रपोजल का फॉर्मेट और प्रपोजल के लिए क्या रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, वो नतीजे में अपनी प्रपोजल जमा करवाएगा। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है तो कोटेशन में हम टेंडर नोटिस भी करते हैं, तो उसमें टेंडर डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं और टेंडर वो जमा कराता है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कोटेशन का फॉर्मेट हम देते हैं और वो भर के जमा वो करवाता है। तो ये इंफॉर्मेशन है, कोटेशन है, प्रपोजल है, टेंडर है, बिड है,
इनमें से कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम किसी न किसी तरीके के साथ रिक्वेस्ट करते हैं, उसके फॉर्मेट्स उनको देते हैं और नतीजे में हमें उनको वो डॉक्यूमेंट्स फिल्ड फॉर्म में हमें जमा करवा दिए जाते हैं। तो ये जनाब मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ऊपर ना रहिएगा कि इधर ये सिर्फ 3 किस्म की चीजें दी हुई हैं, और भी चीजें हो सकती हैं और उनको मद्देनजर रखना होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस और एसओडब्ल्यू से निकलता है समटाइम्स यूज व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर सर्विसेज। जब हमने सर्विसेज लेनी होती हैं तो हम उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बता देंगे, ये चीज इस हद से ऐसे ना हो वैसे ना हो। तो सिमिलर टू द स्टेटमेंट ऑफ वर्क, our TOR typically includes these elements. Tasks the contractor is required to perform as well as specified coordination requirements. Standards the contractor will fulfill that are applicable to the project. Data that needs to be submitted for approval. Detailed list of all data and services. Definition of schedule for initial submission. इसी तरह जब मैं सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया कर रहा हूं तो मुझे बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। जो वेंडर्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी देखनी होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट और लाइफ साइकिल देखनी होगी। लाइफ साइकिल कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, उसको चलाने की कॉस्ट क्या है, रनिंग कॉस्ट, डिलीवरी डेट्स क्या है, टेक्निकल एक्सपर्टीज और अप्रोच, स्पेसिफिक रेलेवेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं है, एडिक्वेसी ऑफ द प्रपोज अप्रोच एंड वर्क प्लान इन रिस्पॉन्डिंग टू द एसओडब्ल्यू। वो मतलब कोई वायबल सोल्यूशन दिया है या एमी बोंगिया मार दिया। की स्टाफ क्वालिफिकेशन, अवेलेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड सुटेबिलिटी ऑफ द नॉलेज ट्रांसफर प्रोग्राम। ये सब चीजें मुझे सोर्स सिलेक्शन में कंसिडर करनी चाहिए। मेक और बाय डिसीजन में आपको पहले बता चुका हूं, इंडिपेंडेंट कॉस्ट एस्टिमेट जो हम खुद लगाते हैं, एंड चेंज रिक्वेस्ट वगैरह। अच्छा जी, फिर आ जाइए, ये यहाँ पे एक बड़ा अच्छा चार्ट इसने दिया हुआ है, कंपैरिजन किया हुआ है प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स का। टेबल है 12.1, अगर ये स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा तो ये आप खोल सकते हैं। टेबल है जी 12.1 और इसके अंदर उसने चारों चीजों का कंपेयर किया हुआ है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान, व्हाट इज इंक्लूडेड इन प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी, व्हाट इज इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ वर्क एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन बिड डॉक्यूमेंट्स। अब आप देखिए प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान में क्या कुछ हो सकता है, कैसे प्रोक्योरमेंट की जानी है, टाइम टेबल क्या है, प्रोक्योरमेंट के मीट्रिक्स नापना तोलना कैसे है, जिम्मेदारियां स्टेक होल्डर्स की क्या होंगी, प्रोक्योरमेंट की अजम्पशन और कंस्ट्रेंट्स क्या है, लीगल जुरिस्डिक्शन क्या है, करेंसी क्या है, इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स की जरूरत है या नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट इश्यूज इसमें आएंगे, प्री क्वालिफाइड सेलर्स अगर अगर एप्लीकेबल है तो। प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी में डिलीवरी मेथड आता है प्रोक्योरमेंट का, एग्रीमेंट की किस्म आती है और प्रोक्योरमेंट की फेजेस आती है। ये तीन चीजें आपकी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी में आती है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क में हमने क्या चीज खरीदनी है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स वगैरह और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ कोलैटरल सर्विसेज, एक्सेप्टेंस मेथड्स एंड क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस डेटा एंड अदर रिपोर्ट रिक्वायर्ड, क्वालिटी क्या है, पीरियड एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, करेंसी, पेमेंट स्केड्यूल और वारंटी। तो स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो है दिस कुड बी एज डिटेल्ड एज दिस, बट जरूरी नहीं है कि ये सारी डिटेल्स लाजमी तौर पे आपने इसमें देनी है। स्टेटमेंट ऑफ वर्क कैन बी as simple as a one page document and it could be as detailed as possible. बिड डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ये चीजें और भी बहुत सी चीजें आप डाल लीजिए इसके अंदर, इंटेंशन फॉर बिड भी डाल लीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी डाल लीजिए, टेंडर डॉक्यूमेंट भी डाल लीजिए, जो डालना है इसमें डाल लें। कंडक्ट प्रोक्योरमेंट जनाब, अब ये वक्त आ गया है कि जिस वक्त जो प्लान, असल में सारी कहानी तो प्लान में थी, सब हमने सोच समझ के प्लान करके वहां रख लिया हुआ है। अब हम कंडक्ट प्रोक्योरमेंट में उस पे अमल पैरा होने जा रहे हैं। मतलब हमने कहा जस्ट इन टाइम वाली फिलोसफी के तहत कि जनाब ये मार्च में हमने ये प्रोजेक्ट, ये वाला काम जो है शुरू करना है, तो भाई कोई जनवरी में आपको शायद उसका प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए, अखबार में शायद दे देना चाहिए जनवरी के शुरू में, ताकि मार्च तक उसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाए। तो ये जो जनवरी से लेकर मार्च तक का पीरियड होगा, इसमें हम जो कुछ करेंगे अखबार में इश्तेहार देने से लेकर कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड हो जाने तक का अमल, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन कंडक्ट प्रोक्योरमेंट। तो बाकी चीजें तो वही है ना जो कि प्लानिंग में हमने लिखी थी, तो वही आपके पास प्रोजेक्ट प्लान भी है, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, स्कोप बेसलाइन, ये सब चीजें मेरे पास इनपुट में है। और क्योंकि मैं
आई एम गोइंग टू बी इंटरेक्टिंग विद द कंसल्टेंट, तो भाई मुझे सब पता होना चाहिए कि ये जो पोर्शन ऑफ वर्क उसे दे रहे हैं उसका स्कोप क्या है, उसके स्कोप को बदला कैसे जा सकता है, रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह, कम्युनिकेशन प्लान, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, सब कुछ। इसलिए और डॉक्यूमेंट जो मुझे चाहिए इसमें लेसन लर्न है, प्रोजेक्ट का स्केड्यूल जो बना हुआ है, जो मेरे ओवरऑल बड़े प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बना हुआ है, उसको सामने रखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएट करते हुए हम इसको इस खातिर में ला सकें कि कहीं उसके खिलाफ, मेन प्रोजेक्ट के खिलाफ, स्केड्यूल के खिलाफ कोई चीज ना जा रही हो। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और रिस्क रजिस्टर, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट जितने भी हमने बनाए थे वो इनपुट में जाएंगे, सेलर की प्रपोजल्स रिसीव हो जाएंगी, एंटरप्राइज मॉनिटरिंग फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स, यहाँ पर भी हम एक्सपर्ट जजमेंट इस्तेमाल करेंगे। एडवर्टाइजिंग से लेकर बिड कॉन्फ्रेंस से लेकर अल्टीमेटली उस कॉन्ट्रैक्ट के अवार्ड हो जाने तक, ये आउटपुट में आप देख सकते हैं, सिलेक्टर का, सेलर का सिलेक्ट हो जाना और एग्रीमेंट्स का साइन हो जाना, ये दो चीजें मेरी मेजर आउटपुट के तौर पे आती है। और जो मेरे टूल्स में आप ये देखिए, एडवर्टाइजिंग है, बिडर कॉन्फ्रेंस है, डाटा का एनालिसिस, प्रपोजल की इवैल्यूएशन सबसे बड़ा काम, और निगोशिएशन सारा सिलसिला, जिसके नतीजे में प्रोजेक्ट प्लान, डॉक्यूमेंट्स और एसेट्स वगैरह अपडेट हो जाएंगे। लेट अस मूव ऑन टू, कहां पर, ये प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंटेशन हम बात कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या क्या कुछ होता है, बिड डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्क और इंडिपेंडेंट कॉस्ट एस्टिमेट, सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सब कुछ। सेलर का प्रपोजल भी इसमें इन हो रहा है, हमें सेलर ने जो चीजें बिड्स अपनी जमा कराई हैं, प्रपोजल जमा करवाई हैं, वो प्रिपेयर्ड इन रिस्पॉन्स टू द प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट, जो हमने डॉक्यूमेंट दिया था पैकेज, उसके नतीजे में जो चीजें फॉर्मेट के ऊपर से जमा कराई हैं वो हमें यहाँ रिसीव हो जाएंगी, फिर हम बिडर कॉन्फ्रेंस में उनको डिस्कस करेंगे। एंड नहीं सॉरी, बिडर कॉन्फ्रेंस पहले होगी, प्रपोजल बाद में जमा होगी, सॉरी। और फिर जनाब आप आ जाइए इसके एक्सपर्ट जजमेंट, हमें पता है क्या है। एडवर्टाइजिंग का मतलब है अखबार में इश्तेहार देना या जो भी कोई तरीकाकार आपने उसको एडवर्टाइज करने के लिए रखा है वो। बिडर कॉन्फ्रेंस, जैसे मैंने कहा कि अखबार में इश्तेहार देने के बाद और जब वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ले जाता है, उससे लेकर बिड जमा कराने की तारीख के दौरान बीच में अगर क्लैरिफिकेशन देने के लिए हमें इन सारे बिडर्स को बुलाना पड़ता है और एक बिडर कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, तो इसको हम बिडर कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और इसमें हम कम से कम एक बिडर कॉन्फ्रेंस जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अमूमन लोग पहली बिडर कॉन्फ्रेंस में तैयार नहीं होके आते, वो बस ऐसे ही उठ के मुंह उठा के आ जाते हैं, पता उन्हें होता कोई नहीं है किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना तो प्रपोजल बनाई होती है उन्होंने, बस अखबार में देखा होता है और किसी ऐसे अनरिलेटेड आदमी को उठा के भेज देते हैं कि जाके तुम बिडर कॉन्फ्रेंस अटेंड कराओ। तो वो वहां पे चूंकि बिल्कुल ही उसे पता सता होता कुछ नहीं है, आ जाता है वहां पर, तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट हर किसी का होता है वो ये होता है, सर टाइम बड़ा कम है, अब इसकी डेट नहीं बढ़ा सकते। बट दिस इज द चीपेस्ट आर्गुमेंट एनीबॉडी कुड कम अप विद, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें खुद तो पता तो है कोई नहीं करना क्या, तो वो एक ऐसी बोंगी मारने के लिए ये आर्गुमेंट जरूर देते हैं, और हर कोई ये आर्गुमेंट देता है। Data analysis techniques that can be used for this process include but is not limited to proposal evaluation। ये मेरा डाटा एनालिसिस का टूल जो है, यहाँ पर प्रपोजल्स को एवेल्युएट करना है, ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि सारी प्रपोजल्स कंप्लीट हैं और उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो जो बातें हमने मांगी थी उनका जवाब दिया है, बिड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट वर्क के मुताबिक, सोर्स सिलेक्शन क्राइटेरिया को हम उसके मुताबिक फिर इस्तेमाल कर पाएंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जिसके अंदर हम निगोशिएशंस, खासतौर पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने इससे जब निगोशिएट करना है कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें निगोशिएशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। नतीजतन हमारे पास सिलेक्टेड सेलर आ जाएगा और एग्रीमेंट आ जाएगा, और ये एग्रीमेंट और ये सिलेक्टेड सेलर हमने आगे भेज देना है फॉर कंट्रोल प्रोक्योरमेंट। एग्रीमेंट में प्रोक्योरमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क भी शामिल होती है, उसमें स्केड्यूल भी शामिल होगा, माइलस्टोन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, प्राइसिंग, पेमेंट्स कब कब होनी है, मतलब जो कुछ भी इंसेंटिव, पेनल्टी, सब सब शराइत, सब कवानीन, सब शराइत, कैसे किन किन तरह से कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किया जा सकता है, चेंज रिक्वेस्ट कैसे होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, वगैरह वगैरह। और बाकी फिर अपडेट्स वगैरह है। आखिरी प्रोसेस हमारा जनाब है कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स का, और कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स में वही जो मैं आपसे कह रहा था, दो तीन बड़ी बड़ी चीजें। एक तो इशू है यहाँ पर चेंज रिक्वेस्ट कैसे हैंडल होगी, एक बात। दूसरा इशू है क्लेम्स कैसे हैंडल होंगे। तीसरा पेमेंट्स कैसे हैंडल होंगी। चौथा रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होंगे।
भाई इसके गिर्द सारी कहानी घूमती है और इससे कंट्रोल प्रोक्योरमेंट्स होती हैं। तो मतलब ये हुआ कि मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था, पहले पहले हम चेंज की बात कर लेते हैं। इफ देर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई शराइत हैं, जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर हमारा बैठा हुआ है, जो भी कोई प्रोजेक्ट में बैठा हुआ है और वो उसको कंट्रोल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई शराइत के मुताबिक तमाम ऑडिट्स और इंस्पेक्शंस करेगा। ये 4 और 5 जो टूल है, ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन करेगा। अगर कोई चीज नहीं लिखी हुई तो उसका वो वाला ऑडिट और इंस्पेक्शन करने की इजाजत नहीं है, और कभी भी नहीं करने देगा आपको वेंडर। वो कहेगा जी कहाँ लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, दिखाएं जरा। वो आप कहेंगे नहीं, ये तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम देखें भी ना काम आपका। वो कहेंगे अच्छा तो कोर्ट में जाए, वहां से इजाजत लेके आ जाए। तो कहने का मकसद है कि जो भी काम करना है कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, साइन होते वक्त, अक्लमंदी का तकाजा है कि उसको, अक्लमंदी का दामन हाथ से आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना और आपने वो चीजें लिखवा लेनी है जो भी है। तो एक तो ये, फिर है कि जो शराइत एग्री हुई हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी वजह से उनके मुताबिक काम नहीं कर पा रहा तो वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई तरीके कार के मुताबिक चेंज रिक्वेस्ट फ्लोट करेगा। अगर अब आप माई बाप हैं उसके, आपके पास चेंज रिक्वेस्ट आई है, अगर आप समझते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, और ये मतलब आपने दो चीजें देखनी है ना। पहली बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और दूसरा मेन प्रोजेक्ट पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर तो मेन प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता और कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क पड़ता है तो आप रीनेगोशिएशन की बात करेंगे। अगर वो भी नहीं पड़ता तो आप उसे इजाजत दे देंगे। अगर तो प्रोजेक्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, मेरे मेन प्रोजेक्ट के ऊपर, उस सूरत में मैं ये चेंज रिक्वेस्ट बनाकर फर्दर आगे ऊपर भेजूंगा और उन्हें कहूंगा जी कॉन्ट्रैक्टर ये काम फलानी तारीख तक कंप्लीट नहीं कर पा रहा और इससे आपका मेन प्रोजेक्ट जो है वो इतना डिले होने का चांस है, तो इस का इलाज बताए। इसकी चेंज रिक्वेस्ट का वो इलाज करेंगे। और अगर उन्होंने जो भी अगर अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है यार 4 दिन तुम डिले कर लो, तो मैं अलाउ कर दूंगा अपने कॉन्ट्रैक्टर को। अगर वो कहेंगे नहीं आप कर सकते हैं, तो मैं निगोशिएट करूंगा अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि भाई ये आपकी जो चेंज रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं हो रही और आप कोई और अल्टरनेटिव निकालें। इसी तरह से ये भी तो मुमकिन है कि हमारा मेन प्रोजेक्ट जो है, हो सकता है उसने कोई आउटपुट देना था जो कॉन्ट्रैक्टर ने इस्तेमाल करना था और वो नहीं दे पाया, जिसकी वजह से डिले कॉज हुई है। कॉन्ट्रैक्टर तो आपके गले पड़ जाएगा। वो कहेगा जी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आपने ये चीज मुझे देनी थी और जितने दिन आप डिले करेंगे आपको पेनल्टी पड़ेगी। मतलब जिसका हाथ स्ट्रांग होता है वो दूसरे को पकड़ के रगड़ने की कोशिश करता है। तो जनाब आप भुगतें। तो बात ये जी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये जो ऐसी चेंज रिक्वेस्ट हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोजेक्ट के अंदर से जर्मिनेट हो रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट पे इम्पैक्ट करती हैं, इनको जितनी जल्दी हो सकता है आइडेंटिफाई करें और रिजॉल्व करें। अगर आपने इनको पाला तो ये कॉन्ट्रैक्ट में सारी कसर निकल जानी है आपकी। कॉन्ट्रैक्टर ने आपसे इतना पैसा निकाल लेना है कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये जो आईडीबी में हमारे साथ यही हुआ है ना, कि मतलब वो पहले से ही लिखवा लेते हैं कि जी आपको हम बिजली देंगे और उसका इतनी बिजली आपने हमसे खरीदनी है, भले आप इस्तेमाल करें या ना करें, गवर्नमेंट इज सपोज टू पे दैट मच अमाउंट। अब जनाब वो गवर्नमेंट भी आपकी ठंडी होती है, कौन सा उनके बाप का माल है। वो कहते हैं जी ठीक है बंद कर दो बिजली। अब वो बंद जब कर देते हैं बिजली तो वो कहते हैं जी हमने तो नहीं कहा था बंद करो, बंद कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है कि आपने हमें महाना मिनिमम इतनी पेमेंट करनी है। अब प्लांट बंद है या चल रहा है तो पेमेंट तो करो। इसी से आपका वो सर्कुलर डेट और बाकी तमाम ड्रामा होता है। आप इधर से पैसे निकाल के उसको दे देते हैं, उधर से कहते हैं तुम्हें वो दे देगा, तो वो एक सर्कुलर डेप्ट बन जाता है। तो खैर एनीवेज ये एक लंबी चौड़ी कहानी है, मगर ये चेंज रिक्वेस्ट को बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ हैंडल करने की बात है। दूसरी चीज, अ, जब मेरा कॉन्ट्रैक्टर कोई काम कर लेगा, जैसे मैंने पहले भी बयान किया, तो वो क्लेम दाखिल करेगा कि जी मैंने ये काम कर दिया, मुझे इसकी पेमेंट की जाए। आप कहेंगे एक मिनट ठहरो, आप उसका क्लेम एड्रेस करेंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे और देखेंगे कि आया कि जो वो क्लेम कह रहा है कि जी मैंने बना दिया, ठीक बनाया, वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक नहीं है तो मैं उसे कन्फ्लिक्ट करूंगा ठीक करके लाओ। और जब तक वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक उसका क्लेम आगे नहीं जाएगा। जब वो क्लेम उसका आगे चला जाएगा, पास हो गया, क्लेम पास हो गया, तो अब क्या होगा, अब उसकी उससे हम डिलीवरेबल एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके उसकी पेमेंट को प्रोसेस करेंगे। तो ये पेमेंट वाला भी काम इसके अंदर हो गया।
और जब ये पेमेंट वगैरह हम कर देते हैं तो आखिर में हम अपना रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, उसको रिकॉर्ड कीपिंग कहते हैं। तो तीन काम इधर हो रहे होते हैं, क्लेम एडमिनिस्टर हो रहा होता है, पेमेंट रिलीज हो रही होती है, पेमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है, या और तीसरी चीज है रिकॉर्ड की मेंटेनेंस। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो चार चीजें हो रही हैं। एक तो चेंज रिक्वेस्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ, प्रोजेक्ट से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ या कॉन्ट्रैक्ट से प्रोजेक्ट की तरफ, बोथ वेज चेंज रिक्वेस्ट का इंतजाम, दूसरा क्लेम, तीसरा पेमेंट, चौथा आपकी रिकॉर्ड मेंटेनेंस। बाकी जो उसका टूल है, जो मेन फंक्शन है, वो ऑडिट्स और इंस्पेक्शन है, और ये तकरीब, और डाटा एनालिसिस में हम वो तमाम डाटा एनालिसिस करते हैं जो हम स्केड्यूल के लिए, कॉस्ट के लिए और स्कोप के लिए करते हैं। वही चीजें सारी जो हमने पहले पढ़ी हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से, ट्रेंड एनालिसिस, फोरकास्टिंग, सारा कुछ करेंगे हम यहाँ पर। तो नतीजे में आपके प्रोक्योरमेंट, जब ये काम सारे हो जाते हैं तो सारी प्रोक्योरमेंट एक एक करके क्लोज हो जाती हैं। वर्क परफॉर्मेंस डाटा जो था वो वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट, ये 6 नंबर पे इनपुट में वर्क परफॉर्मेंस डाटा था, इसको इस एनालिसिस से निकाल के हमने वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन बनाया और मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क को भेजा। बाकी आपकी चेंज रिक्वेस्ट जहां से अगर जनरेट होती है, बाकी सब चीजें अपडेट हैं, प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट प्लान अपडेट हो जाएगा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स अपडेट हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ दिस थिंग विल गो ऑन। अब मैं एक नजर देख लेता हूँ कि इसके अंदर कोई खास चीज हो। बोथ द बायर एंड द सेलर एडमिनिस्टर द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सिमिलर पर्पसेस। ईच इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट बोथ पार्टीज मीट देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो ऑब्लिगेशन है, वो आपके लिए लीगली बाइंडिंग है, until and unless वो कानून के साथ क्लैश ना करता हो। Legal nature of the relationship makes it imperative that the project management team is aware of the implications of actions taken when controlling any procurement. On larger projects with multiple providers, a key aspect of contract administration is managing communication among the various providers. Because of the legal aspect, many organizations treat contract administration as an organizational function. तो ये तो जैसे आप कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट का हमारा डिपार्टमेंट है या उसका, तो वो आप कहते हैं ये तो नेचुरल है, ये तो हमारा डिपार्टमेंट ये काम करेगा। तो बेशक इसको ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के तौर पे ट्रीट किया जाता है और इसको प्रोजेक्ट के अंदर लोग अक्सर कंसिडर नहीं करते। लेकिन वही बात जो मैंने आपसे पहले भी की थी कि अगर तो ये प्रोक्योरमेंट हमारे प्रोजेक्ट के लिए है तो प्रोजेक्ट मैनेजर को पता तो होना चाहिए, ही मस्ट बी इन फुल पिक्चर कि क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ऐसा ना हो कि कोई और ही उसको हैंडल कर रहा हो और वो उसको छोड़ छाड़ के बैठा हो, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट सफर कर जाएगा। While a procurement administrator may be on the project team, his individual typically reports to a supervisor from a different department. Control procurement include application of the appropriate project management processes to the contractual relationships and integration of the outputs from these processes into the overall management of the project. This integration often occurs at multiple levels when there are multiple sellers and multiple project services are results. मतलब ये मसला उस वक्त होता है जब कंट्रोल प्रोक्योरमेंट को ज्यादा संभालने की जरूरत तब पड़ती है, जब बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स हों, उन सब में ऑर्केस्ट्रेट जब करना पड़ता है तब मसला कम्प्लेक्सिटी तब आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ डाटा एंड मैनेजिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजरेबल procurement performance indicators. Refinement of project plan और schedules हो सकते हैं, set up for gathering, analyzing and reporting procurement related project data and preparation of periodic reports to the organization. फिर monitoring the procurement environment so that implementation can be facilitated and are adjustments made and the payments of invoice. तो मतलब जो बातें मैंने आपसे कही इन so many words उसने इस तरह से उसे बयान कर दिया। इनपुट्स टूल्स, इसमें कोई मैं देख लूं, कोई ऐसी चीज नहीं है। अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट है, अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट कैन इंक्लूड मॉडिफिकेशन टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट है, जो जैसे हमने कहा था ना, चेंज रिक्वेस्ट को जाती हैं, सॉरी क्वालिटी कंट्रोल को जाती हैं अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट, एग्जीक्यूशन को जाती हैं, तो यहाँ पर भी अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट आ रही है रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो चेंज रिक्वेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रूव होके आती हैं, वो हम इस प्रोसेस को कंट्रोल प्रोक्योरमेंट को देते हैं। और बाकी वर्क परफॉर्मेंस डाटा से हम बड़े पुराने वाकिफ हैं। एंटरप्राइज टूल्स में ये क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन को देख लीजिए। कंटेस्टेड चेंजेस एंड पोटेंशियल कंस्ट्रक्टिव
changes are those requested changes where the buyer and seller cannot reach an agreement or compensation compensation for the change and cannot agree that a change has occurred. These contested changes are called claims. Well, normally claims result in conflict. When they cannot be resolved, they become disputes and finally appeals. तो अगर क्लेम रिपील ना हो तो वो डिस्प्यूट बन जाते हैं और फिर उनकी अपीलें की जाती हैं और फिर लाजमी बात है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ जाना पड़ता है। क्लेम्स को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, प्रोसेस करने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है और मैनेज करने की जरूरत है थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल, यूजुअली इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, शरायत आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। If the parties themselves do not resolve a claim, it may have to be handled in accordance with alternative dispute resolution, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर दोनों पार्टीज आपस में रिजॉल्व ना कर सकें तो किसके पास जाएंगी। टिपिकली फॉलोइंग प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश द कॉन्ट्रैक्ट। सेटलमेंट्स ऑफ ऑल क्लेम्स एंड डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशन इज द प्रेफर्ड मेथड। तो वो ये बड़ा कॉमन सी बात है कि वो कहते हैं कि आप मैटर्स को रिजॉल्व करें, आप निगोशिएट करें, क्योंकि निगोशिएशन से दो पार्टियां जब आपस में बैठ के कोई फैसला करती हैं उससे बेहतर कोई तरीका नहीं। वैसे तो बड़े तरीके हैं आर्बिट्रेशन के। आप इसमें एक तरीका तो है कि आप आर्बिट्रेटर एस्टेब्लिश कर देते हैं, मतलब दोनों पार्टियां मिल के कहती हैं कि जी फलाना बंदे की आखिरी वर्ड होगा, जो वो कहेगा हम वो कर लेंगे। तो एक तो ये तरीका, लेकिन उसमें फिर ये है कि एक ऐसा कॉमन बंदा ढूंढ के कहां से लाया जाए, इसमें अक्सर कंफ्लिक्ट होता है। लेकिन अगर मिल भी जाए, भले उसमें हम दोनों ने उसको सजेस्ट किया हो, लेकिन जिसके खिलाफ वो फैसला देगा वो उसकी बैड फीलिंग तो होगी। वो तो कहेगा कि नहीं यार, एक मजा नहीं आया। इसी तरीके के साथ वो फिर उसका दूसरा सोल्यूशन ये करते हैं, वो कहते हैं कि दोनों पार्टियां अपना अपना जज ले आए, दोनों अपना अपना बंदा ले आते हैं। वो जो बंदा लेके आते हैं उन दोनों बंदों को इकट्ठे एक बेंच की सूरत में बिठा दिया जाता है, केस को दोनों इकट्ठे सुनते हैं और फैसला मशवरे से करते हैं और दोनों का कंसेंसस होना जरूरी होता है। तो यस, ये बड़ा अच्छा तरीका है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी फिर बात अल्टीमेटली वही है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो विल नेवर फील फाइन। फिर आप इसके नंबर को और भी बढ़ा सकते हैं, 2 से 3 4, दो तो है ना कि इसके अंदर मैंडेटरी है कि दोनों एक ही नतीजे पे पहुंचे। हम इसका जो बैलेंस है वो 3 5 7 9 इस तरह रख सकते हैं, बेंच का साइज बड़ा कर सकते हैं। उसके जब बेंच का साइज बड़ा होता है और जब वो इवन में आ जाता है तो उसमें फिर ये बात आ जाती है कि हम मेजॉरिटी के ओपिनियन की बात सुन सकते हैं। आपने देखा होगा कि वो 5 जजेस थे, जो 9 जजेस थे, उनमें से एक ने कहा कि जी मेरी ये रीजनिंग है, मैं नहीं मानता बाकियों की राय के, मैं उसका फैसला बाकियों से डिफरेंट है। तो वो ऐसा हो सकता है। डेटा एनालिसिस में परफॉर्मेंस रिव्यूज हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज फॉर कॉन्ट्रैक्ट मेयर कंपेयर एंड एनालाइज क्वालिटी, रिसोर्स, स्केड्यूल एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एग्रीमेंट के मुताबिक। अर्न वैल्यू जैसे हमने पहले पढ़ा था, कॉस्ट और स्केड्यूल की वेरिएंस, उनकी परफॉर्मेंस इंडेक्सेस वगैरह, और उससे वेरिएंस की आगे ट्रेंड एस्टेब्लिश होता है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन वगैरह निकालना और फोरकास्टिंग करना, ये सारे काम हम कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। इंस्पेक्शंस और ऑडिट्स हैं जी आपकी, और अल्टीमेटली ये आपने इसके आउटपुट्स निकाल दी। सो जनाब, ये दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ प्रोक्योरमेंट। जनाब क्या सूरत हाल है? सर थैंक यू, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। एक मेरा सर बस वो क्वेश्चन था उसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो अवार्ड वाला सिचुएशन होती है। हाँ जी। अब माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जो अवार्ड होता है इट्स अ कैप्ड इंसेंटिव। वो होता है इंसेंटिव ही है, बट आप पहले से उसको बता देते हैं कि भाई इससे ऊपर तुम्हें नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल द कॉन्ट्रैक्टर कि इफ यू फिनिश अ मंथ अर्ली तो आपको 50,000 का बोनस है, इफ यू फिनिश 2 months अर्ली 100,000 का बोनस है और इंसेंटिव है। इफ यू फिनिश 3 months फिर भी 100,000 ही होगा, क्योंकि 100,000 से ऊपर मैं आपको नहीं दूंगा इस काम का। तो माय अंडरस्टैंडिंग वाज कि जो अवार्ड होता है ये कैप्ड इंसेंटिव ही होता है।
जबकि जो ओके इंसेंटिव ओके। होता है ठीक है उसमें आप। हाँ ठीक है। एक 60-40 की रेशियो होती है इंसेंटिव में। हम्म सीपीआई आप जो है वो ये कर रहे होते हैं कि मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में आप ये भी कर रहे होते हैं, हमें सीपीआईएफ ही होता है। हम्म। इसमें आप ओवररन भी वो आपके साथ शेयर कर रहा होता है। हाँ मतलब अगर अंडर कॉस्ट होते हैं तो फिर तो प्रॉफिट का 60-40 या जो भी शेयर रेशियो आप करते हैं डिसाइड, वो कर रहा होता है। लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा मेरे ख्याल में सीपीआईएफ ही था जिसमें आप वो आपके साथ जो है आपका ओवररन भी शेयर कर रहा होता है। लेकिन अवार्ड में हाँ मेरा ठीक ये है। था कि वो हाँ ठीक है, वो बात आपकी सही है। एक मिनट मैं उसको जरा सामने ले लूँ। बहुत ही पीछे रह गया वो। ये पेज कौन सा है इसका? ये जो है ये बिल्कुल है इसमें हाँ ये आ गया, आ गया, आपका आ गया, आ गया। फिजिकल टेक्निक ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट में हम्म। आया जी स्क्रीन पे कि नहीं आया अभी तक? नहीं आया। ये से अच्छा जी, ये सीपीआईएफ का वो कह रहा है सेलर इज रीइंबर्स्ड ऑल द अलाउबल कॉस्ट, जो तो है, फॉर परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट वर्क एंड रिसीव्स अ प्री डिटरमिन्ड इंसेंटिव फी बेस्ड ऑन अचीविंग सर्टेन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एज सेट फोर्थ इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो पहले से उसने बताया हुआ है। और अवार्ड में है ये रीइंबर्समेंट हो रही है फॉर द लेजिटमेट कॉस्ट, बट द मेजॉरिटी ऑफ द फी इज अर्नड बेस्ड ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन ब्रॉड सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। क्राइटेरिया। मतलब बात यह कि वो जो इंसेंटिव की तरह नहीं है ये, इसके लिए आपने पूरा क्राइटेरिया बनाया कि तुम इसमें इतने नंबर लोगे, इसमें इतने नंबर लोगे, इसमें इतने नंबर लोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हें ये अवार्ड मिलेगा। सो ये जिस तरह आप कह रहे थे कि ये इंसेंटिव नहीं है, दिस इज नॉट इंसेंटिव, दिस इज एन अवार्ड एंड डिफाइंड। कैप कैप डाल देते कैप्ड हैं। हो सकता है, कैप्ड हो सकता है। आपने देखिए कैप का मतलब है, इंसेंटिव में तो है ना कि तुम्हें इतने परसेंट जितना काम करोगे उतने फीसद ज्यादा मिलते जाएंगे। इसके अंदर आपने एक फिक्स प्राइस, एक फिक्स अवार्ड सोच रखा है, और दिस इज जी द बिल्कुल सर। मैक्सिमम यू कैन गेट। ठीक जी है, इसमें ये इंसेंटिव वाली बात है ही नहीं। ये है कि तुम्हारी जी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करके तुम्हें ये अवार्ड मिलेगा जो हमने हमने सोच रखा है। और ये अवार्ड क्या देना है उसको नहीं बताया हुआ। ये बात मैं पहले भी कह रहा था कि उसको नहीं पता कि मुझे क्या अवार्ड मिलेगा। ये इंसेंटिव नहीं है, मगर ये है कि वो हम डिसाइड करेंगे कि उसे क्या अवार्ड देना है। अच्छा जी, और कोई चीज मेरे पास और भी है स्लाइडें वगैरह, अगर आपने कोई और चीज समझनी है तो बताइए, आपको कौन सी चीज के अंदर प्रॉब्लम है तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। ये procurement में ऐसे मेरे procurement में ऐसा कोई although this मैंने नहीं दी, I probably do it sometime this weekend। करने को क्या दिए कपूर में मतलब ये जो सर्विस आप ये नए वाली इसमें तीन तीन चीजों में about 80% तो probably इसका भी आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक ब्रेक होना शुरू होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया तो नहीं मुझे अभी तक, स्पेशली आज की बात तो कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं है प्रोक्योरमेंट में हाँ बिल्कुल। ये मैं आपको चंद अभी एक तक। चीजें दिखा देता हूँ। ये है, ये जरा एक नजर देख लीजिए, एक मिनट। ये मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग मेथड जो है, डिजाइन बिड और बिल्ड है, जी सर। ठीक ऑल्टरनेटिव है सर। कॉन्ट्रैक्टिंग मेथड्स हैं, बीओटी है, बीओओटी है, डीबीएफओ है, बीओओ है। इनको ये मैंने थोड़ा सा इधर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है सर। डिजाइन बिल्ड एंड बिल्ड का कहते हैं ट्रेडिशनल थ्री फेज प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड। थ्री फेज के डिजाइन करें,
बिड करें और बिल्ड करें और उसके बाद देके चले जाएंगे, इन विच द रिसिपिएंट कॉन्ट्रैक्ट विद सेपरेट एंटिटीज फॉर ईच द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ द प्रोजेक्ट. It begins with the project design phase, followed by a construction bid phase, including solicitation or selection of the construction contractor, and then active construction phase. तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं. डिजाइन अलग आप कर रहे हैं, बिड आपने की, अगर विन कर ली तो आपको बिल्ड करने को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. तो डिजाइन, बिड और कॉन्ट्रैक्ट. अल्टरनेटिव में आप आ जाएं, ये सारे इसने दिए हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में. पब्लिक में प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिल्ड, ऑपरेट और वो आता है बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट. और अगर आप पब्लिक की तरफ जाएं, पब्लिक की फेवर में, वो बीओटी या बीओओटी है. बीओटी का मतलब है कि अपने पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता. वो बिल्ड, ओन एंड ट्रांसफर, सॉरी बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर इज द इजीएस्ट थिंग, कि भाई हमें बना दो, चला दो और हमें दे दो. और दूसरा है बीओओटी. लेकिन जो प्राइवेट वालों के लिए बेहतर है कि वो कहते हैं बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन, ओन एंड ऑपरेट. वो कहते हैं ये बस ये हमें ही दे दो, आगे ट्रांसफर ना करना पड़े. अच्छा आगे जनाब, ये वही चारों चीजें, बीओटी, बीओटी, डीबीएफओ और बिल्ड, ओन, ऑपरेट. BOT is a private sector participation model in which a project company promoter is established to finance, design, construct, operate a facility for a concession period before it is transferred to the government. Ultimately उस चीज ने गवर्नमेंट को जाना है, तो आपने कंसेशन पीरियड तक 10 साल 20 साल आपने कहा जी ये तुम चलाओ. Project sponsor arrange necessary financing for the realization of the project through equity contributions and loans. The BOT entity undertakes finance, design, construction as well as operation, and so the client is taking no direct cost risk other than the possibility that the facility does not meet its need or that the concession agreement is unsatisfactory. ये तो जनाब BOT की डेफिनेशन होगी. बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ये कॉन्सेप्ट है जी अकॉर्डिंग टू मैकडॉर्मेट was established more than a century ago to construct canals and railways, was sought and encouraged by governments as a means of obtaining private sector finance for projects such as infrastructure projects, which in modern times have been a drain on the finances of the project sector. A project based on the granting of a concession by a principal, usually a government, to a promoter, sometimes known as the consignee, who is responsible for the construction, financing, operation, and maintenance of the facility over a period of the concession before finally transferring the facility at no cost to principal, a fully operational facility during the concession period. The promoter owns and operates the facility and collects revenue in order to be able to repay the financing and investment cost, maintain and operate the facility, and make a margin of profit. ये हो गया जी BOOT. फिर खाली BOO जो है, there are many similarities between BOT and BOO. BOO concession arrangement over ownership does not generally transfer back to the government. बस ये फर्क है कि इसमें वो आखिर में गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं होता at the termination of concession agreement. The major difference between financing project BOT and BOO arrangement and the more conventional approach is that the lenders have only the project's expected cash flow to indicate its viability. फिर DBFO है, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस एंड ऑपरेट. कॉन्ट्रैक्ट्स, द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड एसेट्स. प्राइवेट सेक्टर ही एसेट दे रहा है, वही डेब्ट फाइनेंसिंग अरेंज कर रहा है बैंक से फॉर अ हाई शेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट and equity for the balance of the funding requirement and ongoing operation and maintenance services in respect of the assets, but the public sector pays for the assets on completion and for the services when provided. तो आखिर में जब काम कंप्लीट होता है तो पब्लिक सेक्टर पैसे दे के उसको ओन करता है. द प्राइवेट सेक्टर गेट्स पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द by the banks while the public sector pays a capital charge over the contract life, which is used to repay the banks and to remunerate the equity. तो ये बस कुछ आपको ये मॉडल्स मैं दिखाना चाह रहा था. और भी इस तरह की चीजें हैं, अगर आप कोई चीज पूछना चाहेंगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे. जी
तो थैंक यू। मैं इनको भी सलाह देखूंगा। लेकिन इसमें प्रोक्योरमेंट में तो ऐसा मेरी कोई बड़ी कोशिश नहीं है। अब बस मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कुछ